सर आपका वॉइस नहीं आ रहा, माइक म्यूटेड है। क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है। अच्छा बोलिए, क्या डाउट है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। The two objects are moving in a straight line. Their position versus time graphs are as in the figure. The relative of A with respect to B. मतलब x एंड a दोनों है ना, a एंड b। एक 37 है, एक 53 है। एक ओरिजिन से स्टार्टिंग है जो 37 में है ना, और दूसरा इसके साथ 53 एक्स एक्सिस के साथ ये 53 Relative velocity is and then is also 53, you know, right? तो x एक्सिस के साथ a भी 37 बना रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ a नीचे का b है क्या और ऊपर का a? नीचे का A ऊपर का A ऊपर का B. तो फिर वेलोसिटी ऑफ a is tan 37 and velocity of b is minus tan 37. ठीक है, so relative velocity is 2v, okay, 2v के whatever 2v मतलब 2 into 3 by 4, so you're getting it as a 3 by 2, whatever meter per second ले unit ले लेते meter per second. What is asking for? ये B का समझ नहीं आया. B tan 57 में तो वर्टिकल के साथ भी मेजर कर देते हैं, तो फिर कोई और एक्सिस ले लेते हैं, उसका साथ भी मेजर कर सकता था। स्लोप तो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ मेजर करना ना, स्लोप तो हमेशा एक्स एक्सिस के साथ। हाँ, नेक्स्ट 36 पढ़ो, क्वेश्चन 36। क्वेश्चन पढ़िए ना, तुम क्वेश्चन लिखो पूरा। x cube is equal to 8t and velocity of the particle at t is equal to 8. वेलोसिटी कितना है at t is equal to 8 ऐसा, तो x क्यूब है तो तुम उसको डिफरेंशिएट कर लिए, ओके। तो 3x square dx by dt is equal to 8, ठीक है। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया तो 3x square into velocity is 8, तो velocity is nothing but 8 by 3x square है। at t is equal to 8, x का वैल्यू क्या होना चाहिए? x क्यूब is equal to 8 into 8 64 है, तो x का वैल्यू आ गया 64 to the power 1 by 3 4। देखिए 4 16 4 सर 64 सही है ना, 4 क्यूब सही है ना, करेक्ट है क्या? 4 16 64, तो दिस इज 4। नाउ वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 by 3 into 16, हो गया ना? कितना आ गया? 1 by 6। यस, X equal to cube root 8. रूट ऑफ 8 देखा है क्या प्रॉब्लम? So we a particle is thrown vertically up with speed 45. 15 कोई क्वेश्चन पढ़ना था 15 नहीं मेरा तेरा 12 था, 15 पढ़ो। when a particle is thrown vertically upward from the top of the tower, it reaches the ground in 9 seconds. When a particle is top of a tower, Vertically thrown from the top of a tower, okay, it reaches the ground in 9 seconds. it reaches the ground in 9 seconds. vertically throw किए थे, so reaches the ground ये आगे 9 सेकंड में, ठीक है। When the particle is thrown vertically downward from the top of the tower with same speed, it reaches the ground with 1 second. तो आप T1 T2 वाला कंडीशन से है ना, सही है ना? तो T1 है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ में T2 T ये U में T1 और ऐसा प्रोजेक्ट किए तो T2, तो T is equal to root over T1 T2।
एक क्वेश्चन भी करवाया लगता है शायद, नहीं, ये करवाए नहीं। ये करवाया नहीं, असाइनमेंट में था नहीं। हाँ असाइनमेंट में था, सेक्शन डी में था तो तुम नहीं किए। प्रूफ तो नहीं चाहिए इसके लिए ना, पता है ये जब h हाइट से नीचे आए तो डिस्प्लेसमेंट माइनस h है, ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, तो t की जगह पर t1, ठीक है। एंड सेकंड में जब नीचे आए तो u माइनस था और कोई डिफरेंस नहीं था, ओके, u खाली नीचे की तरफ आ गया, दिस इज द इक्वेशन। तो तुम क्या किए, इस फर्स्ट इक्वेशन को t2 से मल्टीप्लाई किए, ओके, सेकंड इक्वेशन तो इसको t2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको t1 से मल्टीप्लाई कर लो दोनों तरफ, and then rearrange कर लो आंसर हो गया। तो माइनस एच टी टू एंड माइनस एच टी वन, माइनस एच टी वन एंड ऐड करने से ये तो कैंसिल हो जाएगा, यू टी वन टी टू ना कैंसिल हो जाएगा, फिर एडिंग इट एंड ये रहेगा माइनस हाफ जी टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू, है ना, t1 t2 into t1 plus t2, and this is h t2 minus t1, yeah, no a minus h into t1 plus minus h into t2 plus t1 ही है, is minus half g t1 t2, तो t1 plus t2 cancel हो गया, therefore you are getting h as half g t1 t2, and if you are dropping an object, h is equal to half g t square, therefore t square is t1 t2। कौन सा वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट केस का पार्ट ही है, हाँ इसका मतलब है कि तुम अगर वो हाँ हाँ है ना, नहीं आया, नहीं आया समझ में, एक बार और बोलो। हाँ नीचे आ जाएगा, सेम है, सेम, हाँ ये टाइम t1 है, ओके, हाँ 4 सेकेंड बोला है क्या? हाँ सर। अच्छा ये t1 का वैल्यू 4 सेकेंड बोला है ना, 9 सेकेंड, हाँ तो ये बचा हुआ 5 सेकेंड है, हाँ 5 सेकेंड है तो 25 मीटर पर सेकेंड में प्रोजेक्ट की, यू पूछ रहा है क्या? और मतलब एज का वैल्यू पूछ रहा था, क्या क्या पूछ रहा है इसमें? एज सर, टाइप नहीं पूछ रहा है, नहीं सर, टाइम तो बोल दिया, टाइम नहीं पूछ रहा है ना, नहीं तो टाइम पूछ रहा है तो ये करना था, ओके, मैंने सोचा कि टाइम पूछ रहा है, ओके, एंड हाइट इज आस्किंग, तो ये हाइट अगर आस्किंग है तो ऑब्वियसली t1 का, हाँ ये 4 सेकेंड हो गया, एंड ये बचा हुआ 5 सेकेंड हो गया, ओके, हाँ u का वैल्यू आ जाएगा, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gsd कर रही है, निकाल के 2h/g कर सकते, अंडर रूट 2h/g कर t निकाल के कर सकते हैं, t निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन t पूछ नहीं रहा, t निकालने के लिए ही काम करना पड़ रहा ना, t निकाल के लिए t1 into t एक बार में 6 निकलता है, हाँ ठीक है वो हो जाएगा, मतलब इधर मतलब ऐसा हो गया कि इफ यू आर प्रोजेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट वर्टिकली अप, 4 सेकंड में वो ऊपर जाएगा और 4 + 5 9 सेकंड में वो नीचे आएगा, ऐसा ही बात हो गया, ओके 4 ये कितना 4 सेकंड है ना, इसका मतलब है कि इफ यू आर थ्रोइंग फ्रॉम हियर 4 सेकंड में वो ऊपर जाएगा, ठीक है, और फिर 4 + 5 9 सेकंड में ये नीचे जाएगा, सही, मैं बता रहा हूँ कि 4 सेकंड में ऊपर जाएगा और 9 सेकंड में नीचे आएगा, तो h इज इक्वल टू कुछ होता ना हाफ g1 t2, है ना, क्या हाइट था वो क्वेश्चन का, h इज इक्वल टू हाफ g1 t2, 5 into 4 into 9, है ना, तो 180 आ गया, है ना, 180 आ गया, तो वैसा भी अप्रोच कर सकते हैं, और तुम क्या किए
हाँ यू का वैल्यू आ गया 25। अच्छा ठीक है, एच इज इक्वल ये यू का वैल्यू निकाल के एच इज इक्वल यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है, ये कर सकते हैं। ठीक Question number 29. क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। A particle is thrown vertically up with a speed of 45 meter per second. If g is equal to 10 meter per second square, then displacement of the particle during 5th second. Displacement of the particle during 5th second. Sn is equal to u plus n minus half n. हाँ डिस्प्लेसमेंट का पूछ रहा है, हाँ तो डायरेक्टली मिल जाएगा। Sn is equal to u plus n minus half into a कर लीजिएगा। ओके 5th सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट। फिर ये ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था या नीचे की तरफ? ऊपर की तरफ फेंका था 45, है ना? तो 45 में फेंके, तुम शॉर्टकट भी बोले थे, जो भी जैसे भी है। ओके मतलब 5th सेकंड में ऑब्वियसली पता है डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। 40 आ रहा है, 50 आ रहा है, 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो स्पीड 0 होगा, उसमें क्या होगा? करंट होगा। हाँ सही क्वेश्चन हम लोग किए क्लास में 45 यूज करके। सर यहाँ पे वो गलत हो गया था, वो ये माइनस लेगा। हाँ इसलिए ये तो माइनस ही है, इसलिए ये तो माइनस ही है। मैंने अप्लाई किया था, नहीं जा रहा था। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ो। Moving with uniform acceleration along x-axis crosses x equals to 10 meter and x equals to 50 meter with velocities 10 meter per second and 30 meter per second. X is equal to 10 meter and x is equal to, keep quiet and listen to the questions. 10 meter and 15 meter. 50 meter with velocities 10 and 30. 10 meter per second and 30 meter per second respectively. Object is starting from rest, जो भी हो। नहीं Uniform acceleration, ठीक है। Velocities with which it crosses points x equals to 40 acceleration. Train is uniformly accelerating, passes the pole at a speed of u, and then it training and passes the pole at speed v. Then what is the speed of the train at while it passes, while the midpoint of the train passes the pole? एकदम सेम क्वेश्चन हो गया। इधर 40 है, 30 से लेके 40 तक कितना डिस्टेंस है? 30 मीटर है, और 10 से लेके और बाकी 10 है। ओके तो तेरे पास दो इक्वेशन है। स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछ रहा है ना, बट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट 40 पे स्पीड क्या होगा? तो देखिए ये 10 है और ये 50 है और यहाँ का 10 मीटर पर सेकंड है और यहाँ का 30 मीटर पर सेकंड है, और तुम्हें 40 में स्पीड चाहिए, है ना? 40 में क्या वेलोसिटी होगा तेरे पास? ये मालूम है कि 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2a इंटू s। कितना हो गया? 10 से लेके 50 तक 40 था, इक्वेशन नंबर 1। देन यू विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2a इंटू कितना है? 10 से 40 तक कितना है? 30। दैट इज इट। सॉल्व these two equations. ठीक है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को इक्वल कर दिया दोनों का। t square minus q square by 2s whole. एक ही चीज, ठीक है? You're using the same equation only. And then बोलिए और कुछ है?
अब हो गया सर एफ की जो है जो सीरो फोर्स था माइनस एम इंटू है वहाँ पर एम मास एट एनी ऑब्जेक्ट इन कांस्टेंट मतलब वो जो थ्री का हम एग्जांपल लिया था इधर किसका मास लेना पड़ेगा कार्ड का या ट्री का तभी ना ट्री को उसी एक्सप्रेशन होगा, कार्ड का मास नहीं है। जिस ऑब्जेक्ट पे तुम देख रहे हो उसी का मास देना पड़ेगा, ठीक है। तो you're applying a force on a block which is placed on smooth surface. This is a smooth surface. If the block does not slide, does not slide on the wedge, then if the block does not slide on the wedge, then find F. And find F. If the block is not sliding, what can you understand from this? How you can say that mg sin theta is getting balanced by a component of pseudo force. क्योंकि नॉर्मल फोर्स तो है उसमें, नॉर्मल फोर्स तो mg sin theta का परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो ठीक है कि वो pseudo फोर्स रियलिटी नहीं है वो बात। अगर विथ रेस्पेक्ट टू दैट फ्रेम देखा जाए तो सही है, ओके। बट रियलिटी में क्या होता है कि इसके ऊपर एक फोर्स एन लग रहा है, इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन ऐसा लग रहा था, सही है ना? नॉर्मल रिएक्शन है, उसके साथ साथ mg भी है, बस दीस आर द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसमें दो फोर्स एक्टिंग है, एक नॉर्मल रिएक्शन एंड mg, ओके, टू फोर्सेस आर देयर। लेकिन mg यहां पर बैलेंस हो जा रहा है क्योंकि ये वर्टिकली जा नहीं रहा, दिस हैज ओनली हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके। ये देखिए n का दो कंपोनेंट में तुम स्प्लिट किए तो यू गॉट वन कंपोनेंट एज n sin थीटा एंड द अदर कंपोनेंट n cos थीटा, ओके। तो विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम, मतलब रियलिटी है ये, विथ रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम का मतलब हो गया कि ग्राउंड, with respect to inertial frame, mg is balanced by what? By n cos theta, and n sin theta is unbalanced. समझ रहे ना? n sin theta unbalanced force है, और unbalanced force का काम क्या है? Accelerate करना। So n sin theta is equal to mass into acceleration हो गया। आया समझ में? Unbalanced force का काम है accelerate करना। So n sin theta is equal to ma, n sin theta ma, n cos theta है mg, ओके। क्योंकि स्मॉल m को ना एक्सेलरेट करवा रहा है, कैपिटल m को थोड़ी है। n किसके ऊपर एक्टिंग कर रहा है? n किसके ऊपर है? हम लोग अभी जो n डिस्कस किए वो किसके ऊपर एक्टिंग है? स्मॉल m के ऊपर का फोर्स है ना, स्मॉल। नहीं, बड़ा वाला इनमें एक्शन रिएक्शन क्या इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं होता है, कोई भी ग्राउंड के साथ हो। अगर m में नॉर्मल रिएक्शन उस डिफरेंट गिवन डायरेक्शन में होता तो m में नॉर्मल रिएक्शन मतलब उसका रिएक्शन जस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मतलब एक्शन आप कह सकते हैं, जो भी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है, उसके बारे में लोग डिस्कस ही नहीं कर रहे थे।
लोग खाली M के ऊपर का फोर्स डिस्कस किए, समझ रहे ना, फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ब्लॉक M, सो n sin थीटा इज इक्वल टू ma एंड n cos थीटा क्या मिला था, mg, तो इसको तुम डिवाइड किए, इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद क्या मिला, a by g is equal to tan theta और a is obtained as what, g tan theta, समझ रहे ना, a is obtained as g tan theta. So since ये जो ब्लॉक है ना m moves together with the capital M, m plus m behaves as one block, सही है ना, क्योंकि उधर स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो ये वन ब्लॉक हो जाएगा. Therefore F is equal to m plus m into a. आपको समझ में आ रहा है, अगर आपस में स्लाइडिंग नहीं हो रहा है तो यू कैन इमेजिन दैट दे आर वन सिंगल ब्लॉक. सो वन सिंगल ब्लॉक अगर होता तो क्या होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू टोटल मास इनटू, सो a को रिप्लेस कर लीजिएगा. F is obtained as m plus m into g tan theta. हम लोग रिक्वायर्ड चीजें एनालाइज किए हैं, बाकी दूसरा ब्लॉक के ऊपर हम लोग एनालिसिस नहीं डाले. ओके, तो रिएक्शन के बारे में सोचना है तो मतलब बहुत इलैबोरेटेड स्टडी हो जाएगा, एंड इफ यू वांट वी कैन डू दैट, बट व्हाई, हाँ वो भी कर सकते हैं, लेकिन तब तो गलत है ना, वो अप्रोच से डिफरेंट है ना, इनर्शियल विथ रेस्पेक्ट टू, वी कैन डू दैट, इसलिए हम लोग वो सीखे. तो क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू an observer, with respect to an observer on the wedge में अगर observer होता तो wedge is accelerating, सही है ना, wedge is accelerating, thus क्या होना चाहिए, pseudo force must be applied on which one, on the block, क्योंकि आप जिसके ऊपर कंसर्न है उसी में अप्लाई करना है. तो अच्छा, अपना डायग्राम ऐसा था ना, ऐसा था डायग्राम ना, तो इस बार आप ये वेज की रेस्पेक्ट में है, तो वेज की रेस्पेक्ट में होता तो इसमें mg लगेगा, n लगेगा और एक चीज और लगेगा, वो क्या है, स्यूडो फोर्स. देखिए ma स्यूडो फोर्स, समझ गया ना, और सिस्टम बैलेंस में है, सिस्टम इज एट रेस्ट. अभी तेरा फ्रेम में यू आर सिटिंग ऑन द वेट्स एंड यू आर सीइंग द ब्लॉक इज एट रेस्ट, सराउंडिंग्स एंड एवरीथिंग आर मूविंग, सही है ना, यू आर सिटिंग ऑन अ बेड एंड यू फाउंड दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट, बट सारा दुनिया पीछे की तरफ जा रहा. इसलिए तुम्हें पता है कि यू आर एक्सेलरेटिंग, इसलिए तुम स्यूडो फोर्स लगा दिया उस तरफ. अब तेरा मर्जी, तुम कोई भी डायरेक्शन में बैलेंस कर लो, क्यों, क्योंकि सिस्टम इज एट रेस्ट. फोर्स को बैलेंस करते कौन सा डायरेक्शन में, मतलब फोर्स को हम लोग मतलब डिवाइड करते कौन सा, मतलब वी डिवाइड फोर्सेस इनटू कंपोनेंट्स ना, कौन से डायरेक्शन में कंपोनेंट में स्प्लिट करते हैं, एक एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन. यहाँ पर तेरे लिए कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो तुम कोई भी डायरेक्शन में बैलेंस कर सकते हैं. तो सबसे बेहतर तरीका है बैलेंस करने का कि क्या कर लिए, मतलब तुम चाहिए तो n को बैलेंस कर सकते हैं, n sin थीटा ma और n cos थीटा mg कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन टेक दिस mg sin थीटा एंड ma cos थीटा बराबर, कोई भी डायरेक्शन में ये बैलेंस है, समझ रहे ना, क्या कैसे, n cos थीटा mg एंड n sin थीटा ma, जो प्रीवियस केस में किए थे. अदरवाइज हम लोग क्या करेगा, mg sin थीटा इज इक्वल टू ma cos थीटा, दैट आल्सो वी कैन. ओके, as the wedge, as the block ना, as the block is at rest, ये सब conceptual understanding के लिए लिख रहा है, ठीक है ना, with respect to
with respect to what? Wedge. Forces can be balanced in any direction. In any direction. समझ रहा ना? क्योंकि relative acceleration इस बार क्या है? 0 है. Obviously, move तो कर रहा है. Pseudo force पे दिखता है. तुम्हें नहीं पता कि move कर रहा है, but तुम्हें बोला है कि pseudo force acting है. Obviously. तब जाके तुम तेरा मर्जी कोई भी डायरेक्शन में बैलेंस कर लो. ये समझना है इसमें. ठीक है ना? तो तुम क्या कर सकते हैं? ये वाला कंपोनेंट, व्हाट इज दिस? mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट ma का, व्हाट इज दैट? ma cos थीटा. इसको बैलेंस कर दिया. ठीक है? सो यू आर गेटिंग दैट ma cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा. a का वैल्यू आ गया व्हाट? g tan थीटा. यू कैन डू दिस, है ना? You can even do the same other, मतलब जो ऊपर हम लोग किए थे. और रियलिटी में वो बात है. That picture is reality. जो पहले किए थे, है ना? हो गया? कंप्लीट नहीं हुआ था क्या? हो गया ना? Meet the source. थीटा 30 डिग्री दिया है. नहीं किया मैंने 30 डिग्री. Find f so that the system blocks are at rest. Find f so that the blocks are relatively at rest on the bench. Surface smoothing. Make it fast. इस तरफ जा रहा है.
स्मूथ, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, ठीक है, ऑल द सर्फेसेस आर स्मूथ, लेकिन एक प्रॉब्लम इसमें है, वो है कि नॉर्मल फोर्स 0 होने का, उड़ जाने का चांस रहता है ट्रायंगल में रहने के कारण। let's see what happens in this case. तो यहाँ पर क्या है ना, मतलब when you are moving it, ये कॉन्टैक्ट ही लूज हो गया, okay, that problem is there, but friction तो दिया नहीं है, इसलिए और कोई इश्यूज नहीं है इसमें। खाली आपको देखना है कि when we are pulling it in this direction, when we are pulling it in this direction, इसमें एक mg है और इसमें mg sin 30 है, तो ऑब्वियसली ये आधा फोर्स है, तो ये नीचे जाना चाहिए थे, लेकिन तब तुम क्या किए, जब एक्सेलरेटिंग ऐसा किए तो इसमें एक स्यूडो फोर्स भी ma एक्टिंग है, तो ma का एक कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा एंड दैट आल्सो विल बी बैलेंसिंग दिस mg। बस इतना करना है, ठीक है। सॉल्व इट विद रेस्पेक्ट टू द वेट्स। तो आपको इसमें एक्टिंग है mg, ओके, सिंस इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस तरफ एक्टिंग है सूडो फोर्स, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओके, इसमें लगने वाला सूडो फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें लगने वाला सूडो फोर्स में फर्क पड़ता है, और वो है ma, ठीक है ना, दैट विल डेफिनेटली इन्फ्लुएंस, एंड इसका भी mg नीचे की तरफ है। अब बैलेंस करिए जल्दी। ये सिस्टम वेज के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, दोनों का मास सेम, हाँ दोनों का मास सेम, as a system at equilibrium with respect to wedge। बताओ इस तरफ क्या लग रहा था, इस तरफ क्या क्या लग रहा था, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, ma cos थीटा, और इस तरफ mg, तो हम लोग इक्वेट किए mg is equal to mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा, तो you are getting sin theta mg by mg sin 30 mg by 2 plus ma into root 3 by 2, सही है ना, this is going to be mg, so you are getting that acceleration का वैल्यू भी आ गया इसमें। acceleration कितना मिला एक बार बताइए, acceleration क्या मिला, 10 by root 3, g by root 3, acceleration is obtained as g by 2 is ma root 3 by 2, तो a is equal to g by root 3 आया, and then all the system are accelerating together, m plus small m मतलब m1 plus m2 ऐसा लिख लेते हैं, जनरली लिख लिया, into a लिखा, सही है ना, then यहाँ पर आपको m plus m मतलब कितना है 5m, सॉरी डेफिनेटली पता है 7m था, 7m g by root 3 बस। जो ये m पहले वाला इक्वेशन g इक्वल टू a इक्वल टू g tan थीटा, वहां पर तो कोई मास तो नहीं, तो वो इक्वेशन लगाने से भी तो एक्सेलरेशन इक्वेशन क्या है, ना कह रहा हूं, प्रीवियस क्वेश्चन तो अलग सिचुएशन था ना, मैं अगर दो ब्लॉक को पूरी को एक ही ब्लॉक पकड़ के कर, हाँ सर, अगर उसको नेट एंड बैलेंस निकाल ले और उसको ma cos थीटा से बैलेंस कर दे तो एक्सेलरेशन जाएगा और फिर कर जाएगा। यहाँ पर तो टेंशन लग रहा है, पूरा इतना मास है, तो इसलिए पूरा सिस्टम बना है, 2n बना है, 2n 5n दोनों ब्लॉक हो गया, फिर a equals to g tan 30, then total मास 760। लेकिन वो g tan 30 बाई चांस सही हुआ ना, g tan 30 बाई चांस सही हुआ, क्योंकि mg का मास तो इधर लग रहा था ना, अभी ये तो वेरीफाई करना पड़ेगा तुम्हें वो सही होगा या नहीं, बात तो सब कुछ फ्री बॉडी डायग्राम से बनता है, इधर अगर m की जगह पर मैं अगर 3m दे दिया 5m दे दिया तो क्या वो एक्सेलरेट, अभी तो mg sin 30 बैलेंस करने का कुछ सिचुएशंस में दिया गया था, तो दूसरा कोई मास रहने से क्या होगा पता था, है ना,
आंसर अगर बाय सर कोइंसिडेंस mg क्यों होगा mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा? इधर नीचे की तरफ mg लग रहा था, ये पुली सिस्टम जाइए, पुली में देखिए तो पुली का सिस्टम में इधर एक mg लग रहा है और इस साइड में जो ब्लॉक है उसके ऊपर तो इतना इसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा है, तो बैलेंस होना चाहिए ना, सही है। ओके सर। ये दोनों फोर्स मतलब m है तो इसके ऊपर का फोर्स और इसके ऊपर का फोर्स को बैलेंस करवाइए, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा तो थीटा 0 कर देते हैं, है ना, mg sin थीटा तुम बोल रहे हो, देखना पड़ेगा, मुझे नहीं पता, मैं तो प्रूव करके नहीं देखे ऐसा, आपको चेक करना पड़ेगा, मुझे वेरिफिकेशन ठीक नहीं लग रहा उसमें, बस विल हैव टू ट्राई फॉर इट। ओके, दिस इज m1, दिस इज m2 एंड दिस इज कैपिटल M, ठीक है, और इसमें फोर्स F ऐसा अप्लाई किए सो दैट दे आर नॉट रिलेटिवली स्लाइडिंग। आप क्या बोलेंगे इस बात में? If there is no relative sliding, if there is no relative sliding, what is the force? Find F if no relative sliding. इस वक्त में क्या क्या आंसर है आपका? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? m तो बराबर नहीं, इधर m1 है m2 है, तो बराबर नहीं है, m1 और m2 है। लगाइए ना, सूडो फोर्स ही लगाइए, थ्योरी तो वही है कि एक्सेलरेट करेगा, इस तरफ एक्सेलरेट करेगा, ए एक्सेलरेशन में, तो इस पे लगेगा सूडो फोर्स, सही है ना, m2a, सही है ना, और इस पे लगेगा सूडो फोर्स, वो m1a, लेकिन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ, बैलेंस तो करना है m1g को, सही है ना, m1g बैलेंस हो जाएगा, टेंशन है इसमें m2a से, सही है ना। इसका सिस्टम देखेंगे तो आपको पता चल गया कि m2a इस तरफ खींच रहा था और m1g नीचे की तरफ खींच रहा था, तो a का वैल्यू क्या है, m1 by m2 into g हो गया, समझ में आए? Therefore you are getting f is equal to m plus m1 plus m2 into m1 by m2 into g, तो इस बात tan थीटा से वर्कआउट होगा, हाँ, तो थीटा 0 कर लीजिए। अरे तो m1 और m2 अलग अलग तीसरा वैल्यूज अगर दिया होता दैट वाज कोइंसिडेंस, ओके, तो नेवर एवर थिंक फॉर दैट, ऐसा नहीं है, अपना थियरी मत बनाइए, दोनों रखा है कि दोनों को एक ब्लॉक कर दिया, लेकिन दोनों एक ब्लॉक है, एक में mg लग रहा था, उसमें दूसरे में तो लग नहीं रहा ना, इसलिए इश्यू है, दूसरे में mg/2 लग रहा है, both are not similar situation, आप सबको एक ब्लॉक कंसीडर करना पॉसिबल नहीं है। तो सर जो वेज में रखा है अगर उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, नेट अनबैलेंस्ड फोर्स और उसका एमए को उसमें टेंशन दिया जाएगा, फोर्स मान के, हाँ टेंशन को लेके ही बोल रहे हैं, हाँ तो ठीक है, हो जाएगा, और उसमें एमए का जीरो फोर्स मान के उसमें अगर उसका कंपोनेंट बैलेंस कर दे तो हो जाएगा, फिर दूसरे इधर mg यानी t को बैलेंस कर दें, वो तो एक टेंशन अंदर का फोर्स है, तो आप सबको सिंप्लीफाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है, तो बस इतना क्लियर है। Yes, then you can say centrifugal force is also, okay, centrifugal force is a pseudo force, हम लोग एक हेडिंग जैसा दे दिया, स्टेटमेंट है, लेकिन दिस इज ऑब्वियसली कंफ्यूजिंग, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस आता है ना, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपेटल सब कुछ है, इस तरह का करके है,
एक सिंपल क्वेश्चन जो नीट में पूछा था आपको याद होगा, इट इज रोटेटिंग रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ग्रेविटी फ्री स्पेस में घूम रहा है. ओके, द ब्लॉक इज मतलब bob, okay, the bob is rotating in horizontal circle in gravity free space. Gravity free space. ठीक है, तो ये क्यों घूम रहा है? सेंटर की तरफ ये मतलब एक्सेलरेट कर रहा है. घूम रहा है मतलब it is always accelerating towards the center. A revolving object, rotating body is always accelerating towards the center. Sleeping. हर क्लास में तुम भी लेट आते हैं ना, और आराम से नो. And now sitting and sleeping. What sort of seriousness you have? ठीक है, तो यहाँ पर मतलब if an object is revolving, it is always accelerating towards the center, है ना? An object in uniform circular motion. In uniform circular motion, CM लिख लेते हैं, is always accelerating towards the center. ये पॉइंट क्यों लिखे हम लोग? क्यों लिखे? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स भी लगेगा. जिस तरफ एक्सेलरेशन उसी तरफ फोर्स लगेगा. ओके, ओनली वन अनबैलेंस्ड फोर्स विल बी देयर जिस तरफ एक्सेलरेशन है. अब आपसे अगर पूछेगा हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट? वन फोर्स. अच्छा, मैं मार्क करके दिखा रहा हूं आपको. mg तो है नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस है. टेंशन एक एक्टिंग है, तो टेंशन ही प्रोड्यूस कर रहा है. टेंशन प्लस सेंट्रीपेटल फोर्स. First option is only tension. Second option is tension plus centripetal force. Third option is tension, centripetal and the centrifugal force. Fourth option is tension and the centrifugal force. Only tension. Obviously, only tension is acting, and that is providing the centripetal force. टेंशन का काम है. M में थोड़ी फोर्स होता है. फोर्स N फोर्स मतलब 50 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड 55 किसी का ब्लॉक था तो 5 into 10 आ गया 50, है ना? तो तुम बोलने लगे दो फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दैट. कितना है? 50 न्यूटन और M में भी 50 एंड M में दोनों थोड़ी ना. जैसे centripetal force this M into V square by R, that T provides it. So only one force is acting. सही ना? Only one force is acting. True force. तो जब पूछेगा नंबर ऑफ फोर्स तो ट्रू फोर्स है ना. झूठ वाला क्यों पूछेगा? अब तो ऑप्ट भी नहीं करना. How many forces are acting? तो centrifugal force considering नहीं करेगा. No pseudo forces are considered as number. Centripetal है. Tension is providing that. Centrifugal ऐसा ही है नहीं. It's a wrong force, right? Centrifugal is a pseudo force. There is only one force is acting which is towards the center. Therefore, the block is accelerating towards the center. Okay, and we call this force as centripetal force because it is directed towards the center. Tension provides that. Okay, so accelerating toward the center. Thus, tension is the only force acting. Force acting on M, which provides what?
which provides centripetal acceleration. Provides centripetal acceleration. ठीक है? ग्रेविटी फ्री बोला ना, mg इसलिए एक्ट नहीं है. ओके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब आता है? If observer is sitting on the bob, then each and every object में लगेगा opposite direction to acceleration. That is, so if the observer is sitting on the bob, centrifugal force is that force acting on the same block itself. समझ रहा ना? Centrifugal वही है जो observer is sitting on the bob itself, then उसी bob में एक additional force लगेगा क्योंकि वो तो रेस्ट में है. आगे सारा दुनिया घूम रहा है उनके हिसाब से, सही है ना? We are revolving around Earth, but we thought that sun is revolving around us. क्योंकि हमें नहीं पता था कि we are accelerating. सही है ना? यही तो न्यूटन्स लॉ का प्रॉब्लम है कि आपको पता नहीं है तो सारा फिजिक्स गलत हो जाए. ओके, तो हाँ, तो इसलिए हम लोगों को लग रहा था कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड अस, सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स घूमता रहेगा फिर. ओके, सो सारा ऑब्जेक्ट्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा फिर. ओके, सारा ऑब्जेक्ट में सूडो फोर्स लगेगा, लेकिन जिस बॉडी की मतलब जिसमें सेंट्रीपेटल लग रहा था उसी पर लगने वाला फोर्स सूडो फोर्स को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. समझ रहा ना? सो इफ ऑब्जर्वर लिखिएगा, इफ ऑब्जर्वर is on the bob, then pseudo force लगेगा. Pseudo force on the bob is called the centrifugal force. ठीक है ना? Is called the centrifugal force. तो ये घूम रहा है तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ क्या है? AC है, तो इसी के ऊपर क्या लग रहा? MAC. वो क्या है? Pseudo force है. Okay, but doesn't mean that it is really acting. Is there a statement? If there a statement like pseudo force, centrifugal force is reaction of centripetal force. Wrong statement है. Centrifugal force कुछ भी नहीं हो सकता क्योंकि वो है ही नहीं. ठीक है, वो रियलिटी में तो है ही नहीं. Okay, since we are in that frame, we feel it. ठीक है, since you are sitting, आप कहते हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन बहुत बार ये हम लोग एक्सपीरियंस किए. हाँ, एक्सपीरियंस तो करते हैं लोग. कार में ट्रैवल करते वक्त, बस में ट्रैवल करते वक्त, इफ इट इज टेकिंग अ टर्न, लोगों को फील हुआ है ना? विल हैव अ टेंडेंसी टू गो आउटवर्ड्स, है ना? तो वो हमें फील हुआ है. काफी ज्यादा फोर्स, मतलब तुम लोग उसी में घूमे क्या जो घूमता है ऐसा हाई स्पीड मेरी गो राउंड, और वो जो साइड में बैठे हैं उनका हालत खराब हो जाते हैं. हाँ, जो आउटर रेडियस में है और इतना हाई स्पीड में जा रहा है, इसलिए वो कभी फील होता है कि अपना जो टोटल जो क्या है एबिलिटी टू होल्ड थिंग्स, वेट, वो सफिशिएंट नहीं है अपना वेट होल्ड करने के लिए. कभी ऐसा फील होता है कि हाथ वक्त टूट जाएगा. ओके, क्योंकि फील करते हैं कि मैं नीचे गिरने वाला हूं. सही है ना? ऐसा घूमने वक्त ऐसा कभी फील हो जाता है कि नीचे गिर जाए. तो हमेशा आपको वो वाला ठीक है, अलग है, उसमें नहीं होता है. हाँ, वो जाइंट व्हील ग्रेविटी से हो जाते हैं, मतलब फ्री फॉल आ जाते हैं. फ्री फॉल आते वक्त जो भी फील होता है, हाँ, रोल कोस्टर में भी होता है ये चीज. लेकिन ये जो वेट आपको फील होगा, इसमें वेट वाला फील होता है, बहुत ज्यादा वेट वाला फील, और इसमें फ्री फॉल का फील. और जो फ्री फॉल में रहते हैं उनका हाल सोचिए. मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें मतलब स्पेस स्टेशन में है. ओके, दे वर एक्सप्लेनिंग हाउ दे लिव इन स्पेस स्टेशन, व्हाट आर द थिंग्स एंड ऑल. तो वो जो स्पेस स्टेशन में है वो हमेशा बेचारा फ्री फॉल में है. वो मतलब हमेशा हम लोग मतलब वो वाला जाइंट व्हील में वो नीचे गिरते वक्त जो फील होता है ना, वो हमेशा फील होने लगे.
ओके तो फिर आप उसके साथ अटैच हो जाएगा, आपको समझ में आया, यही फील है, कोई बात नहीं। बट आपको ये फील होगा कि मुझे थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्शन मिल जाए तो अच्छा लगेगा। ओके हाँ देखिए हाउ द शैम्पू है। अच्छा हाँ, मतलब जिम वगैरह था उसमें, तो उसमें वो नीचे की तरफ जाने की हाँ उसमें जिम भी है। ओके सब प्लॉटिंग है ना, तो जिम को नीचे की तरफ जाने के लिए उनको मतलब नीचे पकड़ना पड़ता है, नहीं तो वो नीचे नहीं जाएगा। ओके इसलिए आपको खींचना पड़ेगा आपका एनर्जी पूरा यूज करके। तो यस, तो खाली बस इतना है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का बात समझ में आ गया। यस देन मान लीजिए M1 and M2 are revolving at same omega, ठीक है, about the center. Yes question है, this is length L1 and the other has length L2. टेंशन है इसमें T1 और इसमें T2. Find T1 and T2. If the setup is rotating in gravity free space, find tension T1 and T2. अच्छा कल के एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स आ रहा क्या? नहीं आ रहा, फुल मार्क्स आ रहा? नो मिस्टेक्स किए बहुत सारा। सिली मिस्टेक्स मत बोलिए, मिस्टेक्स हुआ मिस्टेक्स। तो 720 में था क्या एग्जाम? अच्छा FT था ना, फर्स्ट FT था। ओके तो कितना मार्क्स आ रहा? 700 प्लस। हाउ मेनी ऑफ यू स्कोरिंग 700 प्लस? 700 कितना? 705। ओके आजकल ऐसा ही हो गया कि 700 के ऊपर चलिए, है ना, पहले 600 प्लस पूछता था, दुनिया चेंज हो गया। ओके अच्छा 680 प्लस 680 to 700, 680 है कितना? 690 बोलिए बोलिए 691 701 भी आ सकता है और 696 भी आ सकता है। 96 भी आ सकता है। मतलब मैंने किया ना ये क्वेश्चन में 2 ऑप्शन मार्क करते हुए उसको काउंट कर लिया तो क्वेश्चन में 2 ऑप्शन अगर किए तो वो रो हो जाता, जीरो हो जाता। हाँ वो क्वेश्चन अच्छा, ये बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब फाइनली इतना पता चला कि गलत हो गया तो ये बहुत मान करने के लिए मैंने एक गलत कर दिया और बाद में देखा एक मतलब कर सकता था उसको 2 मार्क्स ठीक है। और किसका आ रहा 680 प्लस 690 695। ठीक ठीक है तो मेहनत करिए और पॉसिबल चाहिए एग्जाम से। हाँ आंसर की दिया है क्या? आंसर की दिया है क्या? आप बताइए, आंसर की नहीं मिले, आंसर की नहीं मिले। टेलीग्राम हाँ अच्छा वैसा आंसर की एग्जाम के साथ नहीं मिलते हैं क्या? जस्ट आफ्टर FT तो मिल जाता था, नहीं दिया है। कल नहीं दिया। ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट डे मिल जाएगा फिर। ओके कोई बात नहीं है, बाकी देखेंगे कमिंग एग्जामिनेशंस में देखते हैं, लेकिन चाहिए नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा मार्क्स। ठीक है गिव योर फुल, मेहनत बहुत कर लो, देन परसेंटेज विल कम। ठीक है
अब ये सोच के चलिए कि 680 स्कोर करना है। ओके 680 टारगेट करके 680 प्लस एंड गिव यू फुट फॉर दैट। ठीक है, यस। अब देखिए T1 इज आस्किंग, देन T2। सबसे पहले हम लोग T2 के लिए जाएंगे, वो करना बहुत इजी है। T2 M2 वाला ऑब्जेक्ट कितना रेडियस में घूम रहा है? L1 प्लस L2 वाला रेडियस में घूम रहा है, और उसमें खाली एक T2 फोर्स एक्टिंग है ना। सो वी कैन से दैट T2 इज गोइंग टू बी M ओमेगा स्क्वायर R। सेंट्रीपेटल फोर्स इज M ओमेगा स्क्वायर R, सही है ना? मतलब सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर R। आपके समझ में जो T3 उसमें फोर्स है कि ओनली तो उसका फोर्स है, इफेक्ट हो सकता है ना। अरे यार ये तो हम लोग डिस्कस कर रहा था, 2 दिन का डिस्कशन में यही चल रहा था, इसी के ऊपर चल रहा था कि सर आगे का फोर्स भी तो इस पर लग सकता था, इसलिए तो फ्री बॉडी डायग्राम के ऊपर बात होगी। तुम वो सब डिस्कशन मिस कर लिए। फ्री बॉडी डायग्राम का नाम फ्री बॉडी डायग्राम क्यों है, इस तरह का चीजें हम लोग डिस्कस किए थे। हाँ, तुम्हें आगे का टेंशन देखना ही नहीं, किसी को हम लोग को पीटा भी था, हाँ है ना, नॉर्मल फोर्स अप्लाई करने की वजह से। हाँ सही है ना, तो फोर्स जो लग रहा है वही आपको कंसिडर करना। T1 थोड़ी उसमें इन्फ्लुएंस होता है, T1 इन्फ्लुएंस होने के बाद जो आया वो है T2। T1 का इन्फ्लुएंस, सारा इन्फ्लुएंस सब करके फाइनली आया वो फोर्स है T2। ओके, मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि C2 T1 पे इन्फ्लुएंस नहीं करता, ऑब्वियसली होगा, बट दैट वैल्यू इज T2। सो T2 इज M2 ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट ब्लॉक में, ये तो 4M2 था, है ना, 4M2। इसी तरह 4M1 देख लेते हैं। M1 में जब देखे थे क्या है, M1 है, उसके ऊपर देखिए ना, बाहर की तरफ T2 लग रहा है, अंदर की तरफ T1 लग रहा है, और ये भी घूम रहा है कितना रेडियस में, R इज इक्वल टू L1 में घूम रहा है। इसमें कितना अनबैलेंस्ड है, T2 माइनस T1 है या T1 माइनस T2 है? कैसे T1 T2 से क्यों ज्यादा है बताओ? नीचे चला जाएगा, T1 T2 से क्यों ज्यादा है? चला जाएगा क्योंकि नेट फोर्स T1 T2 से ज्यादा है तो इस तरफ चला जाएगा। नेट फोर्स इनवर्ड है ना, नेट फोर्स इनवर्ड है, दैट इज व्हाई द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन, therefore unbalanced force is along that direction। सिंपल है बात। ओके, इफ यू यस बॉडी ऐसा घूम रहा है, इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है, इसलिए T1 T2 से ग्रेटर है। ठीक है, नेट एक्सेलरेशन देखिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस तरफ है, सही है ना, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस तरफ है, दैट इज व्हाई वी विल से दैट T1 माइनस T2 इज M1 ओमेगा स्क्वायर R। आपको अगर फील हो रहा है कि कुछ कुछ पॉइंट आपको लिखना चाहिए तो यू हैव टू राइट इट डाउन। कुछ क्लूज टेक्निक्स वगैरह यहाँ पर डिस्कस करते वक्त, if you feel the net force is acting on the the body is accelerating inward direction. The body is accelerating in inward direction. Therefore, unbalanced force is along inward direction. Yes, तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। T2 को T1 is equal to M1 ओमेगा स्क्वायर R प्लस M2 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, R तो अलग था, R सब्स्टिट्यूट नहीं किया मैं, वही देखिए गलत हो गया इधर। T2 की जगह पर क्या लिखेंगे, M2 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2। ओके, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और इसमें M1 ओमेगा स्क्वायर कितना, L1। अब T1 चाहिए थे, M1 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस T2 व्हाट इज M2 ओमेगा स्क्वायर L1 प्लस L2। समझ गए? यस, कॉनिकल पेंडुलम।
नहीं कर सकता, अलग अलग एक्सेलरेशन है दोनों। इट कैन नॉट बी अ सिस्टम, इट कैन बी अ सिस्टम इफ बोथ आर इक्वली एक्सेलरेटिंग। अलग डायरेक्शन में होने से भी सिस्टम नहीं होता, फिर भी हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना था, इसलिए हम लोग को सिस्टम कर लिए। हम लोग किस में, पुली वाले में एक सिस्टम लेके एक साथ M1G and M2G वगैरह करके हम लोग इसलिए किए कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बता था। ठीक है, दोनों को रेड्यूस आराम से ओके कर सकते हैं, लेकिन पोजीशन भी सेम होना चाहिए। रिंग अगर है तो रिंग में अलग अलग दो मास लेके तुम सेपरेटली नहीं कर सकता, क्योंकि एक का एक्सेलरेशन इस तरफ, दूसरे का एक्सेलरेशन इस तरफ। मैग्नीट्यूड लेके करने से गलती नहीं होता है, मतलब, लेकिन देयर आर मेनी सिचुएशंस इन व्हिच दैट कम्स रॉन्ग। ओके, बट मतलब बाय लूजली देखेंगे तो सही हो जाते हैं। ठीक है, मतलब नीट के हिसाब से बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिफरेंट पोजीशंस में कभी नहीं करना है। डिफरेंट पोजीशन है तो डिफरेंट एक्सेलरेशन आएगा ना। हाँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इनवर्ड्स। हाँ, M2 में सब में सेंट्रीपिटल हमेशा अदर की तरफ। For each and every object, centripetal is towards the center only. Centripetal नाम ही क्या है? है ना? कुछ सेंट्रीपेटल को क्या बोलते हैं? अपना लैंग्वेज में बोलिए। सेंट्रीफ्यूगल है वो। सेंट्रीपेटल फोर्स को क्या बोलते हैं आपका लैंग्वेज में? हाँ, What is the meaning of that? अगर अभिकेंद्र बल कहते हैं तो क्या? हाँ, अभिकेंद्र बल which is directed towards center, that is why the name. Okay, ठीक है ना? जब आपको डाउट होता है तो अपना नाम सोचिएगा, what is the meaning of that, exact name of अभिकेंद्र। अपकेंद्र सेंट्रीफ्यूगल है। हाँ, वो अवे फ्रॉम सेंटर है ना। क्या अभिकेंद्र का मतलब टुवर्ड्स द सेंटर होता है। इसका मतलब तुम्हें लैंग्वेज नहीं पता, मुझे पता है। मैं तो मलयालम वर्ड बोले। ओके, हम लोग केंद्रीय नहीं बोलते, केंद्र पर बोलते हैं। ओके, बस। सो यस, हमें होना ही नहीं चाहिए। मतलब ऐसे ही क्वेश्चन कौन सा चैप्टर में करना आइडिया नहीं आ रहा ना, प्रश्न आ गया तो बोल दिए, लेकिन वो वर्क एनर्जी थ्योरम से पता चलेगा तुम्हें। मतलब फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो वर्क डन बाय द फोर्स इज जीरो, सो काइनेटिक एनर्जी चेंज। हाँ, दैट्स इट, वहां से पता चलेगा। देखिए, अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए थे वो क्या था? वो नहीं, ग्रेविटी फ्री स्पेस में था। वो चीज ग्रेविटी फ्री स्पेस में था, लेकिन अभी क्या है? ग्रेविटी है। अभी इट इज रिवॉल्विंग इन ग्रेविटी। सिंस इट इज रिवॉल्विंग इन ग्रेविटी, वो जो हॉरिजॉन्टल सर्कल में स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल था वो नहीं होगा, ग्रेविटी उसको नीचे तरफ खींचेगा, सब कुछ एंगल में घूमना शुरू करेगा। सही है ना? व्हाइल इट इज रोटेटिंग, इट ऑलवेज रोटेट्स एट सर्टेन एंगल। वैसा भी कुछ राइड्स होता है, बड़ा सा मतलब रोड ऐसा वर्टिकली सस्पेंडेड है एंड ऑल विल सिट इन दैट, और वो घूमना चालू करेगा तो एंगल में फैल जाते हैं। सही है ना? एंड ऐसा घूमता है। The same thing is this. Okay, it is revolving and mg इसमें लग रहा है और टेंशन है। These are the two forces acting, nothing more. Okay, with respect to inertial frame, mg and t are the two forces. Okay, with respect to inertial frame, two forces on it, on the bob, are
mg and t. ओके, mg and t है. इसमें ये वाला कंपोनेंट बैलेंस्ड है. व्हाट इज दैट? इफ यू टेक थीटा t cos थीटा, mg को बैलेंस किए. t cos थीटा इज इक्वल टू mg, मतलब यू कैन से दिस इज बैलेंस्ड फोर्स. लेकिन क्या अनबैलेंस्ड है इसमें? t sin theta is unbalanced. t sin theta is unbalanced. मतलब इसका काम क्या है? ये प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड सेंट्रीपेटल, एग्जैक्टली सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. बस एक्सेलरेशन नहीं प्रोवाइड करते, दैट इज सेंट्रीपेटल. तो t sin theta is, you can say, m omega square r, where this is the radius r. ठीक है ना? ये रेडियस r लीजिएगा, इस रेडियस को r ले लेंगे, है ना? तो ऐसा कोई r रेडियस में ये घूम रहा है, समझ रहे ना? फिर तो तुम डिवाइड करेंगे तो वापस आ गया. टेंशन चाहिए, टेंशन का वैल्यू चाहिए. टी इज टेंशन. आर इज इक्वल टू क्या, एक बार बताइए? आर इज व्हाट? आर इज इक्वल टू, इसका लेंथ अगर एल होता तो बताइए. आर इज इक्वल टू एल साइन थीटा है. सब्स्टिट्यूट करेंगे तो टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल साइन थीटा. आया ना? आया नहीं? एंड साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो टेंशन किसकी बराबर हो गया? एम ओमेगा स्क्वायर एल की बराबर हो गया. ये टाइम पीरियड नहीं है, टेंशन है. टेंशन इज एम ओमेगा स्क्वायर एल. ओके, ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन. कोई भी एंगल में हो, टेंशन एम ओमेगा स्क्वायर एल ही रहेगा. टेंजेंशियली उस समय वेलोसिटी होगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन का होगा ना, क्योंकि ये एक्सेलरेट कर रहा है, तुम छोड़ दिए तो एक्सेलरेट नहीं करेगा, तब वो टेंजेंशियल वो वेलोसिटी होगा उसका. और ये अंडर ग्रेविटी है, तो एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली फेंका वैसा रहेगा, तो वो पैराबोलिक पाथ में जाके गिरेगा. नहीं, कैसे रहेगा? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी रहने के लिए सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, वो तो तुम छोड़ दिए. जैसे उसको छोड़ दिए तो वो आउट ऑफ कांटेक्ट है, उसके ऊपर सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, इट विल फॉल फ्रीली. तो टेंशन का वैल्यू आ गया इधर, है ना? देन इफ यू डिवाइड देम, इफ यू डिवाइड दीज टू रिलेशंस, मतलब t sin थीटा एंड t cos थीटा, व्हाट इज tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला था बताइए? tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला? ओमेगा स्क्वायर l बाई ओमेगा स्क्वायर r बाई g, है ना? इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इनटू l sin थीटा बाई g. ओके, sin थीटा कैंसिल हो गया, तो ओमेगा स्क्वायर क्या मिला? sin थीटा बाई cos थीटा, sin थीटा कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर क्या मिला? g डिवाइडेड बाई l cos थीटा मिला, है ना? और ओमेगा आना चाहिए रूट ओवर g बाई l cos थीटा. समझ रहे ना? ओमेगा. तो टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई ओमेगा. ये टाइम पीरियड है. टेंशन भी है ना, इसकी प्रॉब्लम है. टाइम पीरियड में टाउ ले लिया, इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई इंटू रूट ओवर l cos थीटा बाई g. समझ में आ रहा ना? दिस इज अबाउट कॉनिकल पेंडुलम.
Can I go for next page? Next heading लिखिएगा spring force. If you attach a spring with wall and you pull it, attach a spring with wall and you pull it by distance x. So what happens? उसमें एक force develop होगा जो आपको वापस खींचेगा, वो आपको वापस खींचेगा, है ना? So the spring force will be acting like this, and the spring force हमेशा x के साथ opposite direction में है, मतलब will be in the opposite direction of x. Elongated spring होता तो वो pull करेगा, and compressed spring होता तो वो push करेगा. समझ रहा ना? If you compress the spring, same way if you compress the spring, तो इसमें मतलब इसको तुम compress, ये compressed spring है, तो compress ऐसा शो करने से compressed है, ठीक है ना? compressed है, तो ये अभी spring force इस तरफ भी लगा देगा, and external agent इसमें force इस तरफ दे रहा था, समझ रहा ना? ये external force है, तो spring force इस तरफ था. तो क्या समझना है? An elongated spring pulls, and the compressed spring pushes. Spring में सबसे important letter कौन सा है? Spring में सबसे important letter कौन सा है? Spring और spring, है ना? Spring और spring. Very important, most important letter in spring is P. Why it is important? क्योंकि स्ट्रिंग भी है, स्प्रिंग भी है. अच्छा, स्प्रिंग को क्यों स्प्रिंग नहीं बोलते? और स्प्रिंग को स्प्रिंग बोलता, उल्टा बोल देता, है ना? मतलब स्प्रिंग को स्प्रिंग बोल के स्प्रिंग को स्प्रिंग भी बोल सकता था. जब आप, मेरा बात समझ में नहीं आ रहा आपको? जब डिफाइन करते हैं कोई इनिशियली, अगर स्ट्रिंग को स्प्रिंग बोलने लगे तो आप स्प्रिंग को स्ट्रिंग ही समझते, सही है ना? कंसेप्ट होता है. तो जब नेम दिए तो ऐसा क्यों दिए होंगे? हाँ, इससे टेंशन होता है. स्प्रिंग से खाली खींचना ही पॉसिबल है. ओके, एंड यस, स्प्रिंग can by using spring you can push and also you can pull. That is why he होना है spring. Push and pull both are possible in spring. इसलिए वो स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बनाते वक्त फिजिक्स अप्लाई किए थे, समझ रहे ना? और दो लेटर था उनके पास, टी कहाँ डाले, टी कहाँ डाले, फिर सोचे ये स्ट्रिंग इज मतलब दैट थिंग इज ओनली अप्लाइंग टेंशन, तो टी इसमें रहते हैं और उसमें पी. ये सच है. और क्या? ये ऑब्वियसली कोइंसिडेंस है, लेकिन बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है. ठीक है. You can find out this kind of beauties in this way. Letters में देखेंगे तो मिल जाते हैं, and that is very properly sitting, very properly matching, you can say. Getting my point? Yes. Okay. So using a spring you can push and pull. That's it. तो compressed होता तो push करेगा and elongated spring होता तो pull करेगा. The situation is same. ये situation भी हो, you can see if you draw the spring separately, free body diagram of the spring, then you can see external agent यहाँ से खींच रहा है और wall भी यहाँ पकड़ के खींच रहा है. ये wall की तरफ से है, ओके, ये wall की तरफ से आया external force, और ये कोई भी external agent की तरफ से आया, agent, one who is pulling it, and
ये दोनों को स्प्रिंग इस तरफ खींच रहा, देखिए इधर स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया, सच वे यहां पर भी स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो गया, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। ओके, एक वेक्टर अगर स्मॉल लेंथ का दिख रहा है तो डोंट वरी अबाउट, इसको इक्वली कर देते फिर, अब सही है ना? ठीक है। सिमिलरली द सिचुएशन इफ यू गो फॉर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, इसमें भी क्या होगा, ये कंप्रेस्ड स्प्रिंग था, इसमें एक्सटर्नल एजेंट ऐसा फोर्स अप्लाई किए तो इधर वॉल भी इसके ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई किए, और दोनों वॉल को और दूसरा एक्सटर्नल एजेंट को ये स्प्रिंग फोर्स क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, सही है ना? इसका मतलब एक स्प्रिंग को तुम वॉल में अटैच ना करके अपना हाथ में रख के भी फोर्स अप्लाई करेगा तो बोथ आर सेम सिचुएशन। इफ यू आर अप्लाइंग ए फोर्स, दूसरे साइड में भी एक फोर्स लगाओगे, अगर तुम नहीं करोगे तो वॉल से वो मिल जाएगा। एंड यू आर पुशिंग इट, ऑब्वियसली यू आर पुशिंग दिस साइड, दूसरा साइड में भी तुम्हें पुश करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट डूइंग दैट, द सपोर्ट जहां पर स्प्रिंग रखे वहां से वो फोर्स मिल जाता है। सिचुएशन इज सेम। गेटिंग माय पॉइंट ना? ओके, नेट फोर्स हाँ ना, स्प्रिंग कहीं जा रहा है क्या? स्प्रिंग तो वहीं का वहीं रह गया, अनबैलेंस्ड फोर्स तो जीरो है। That is why the center of mass of spring is not accelerating. Okay. Yes. Spring force applied to force का reaction ही है, spring force reaction है। जैसे तुम अप्लाई किए स्ट्रिंग में तो टेंशन रिएक्शन था। ओके, सच्चे नहीं। This is also electromagnetic force. स्प्रिंग में मतलब स्ट्रेन होता है। ओके, स्प्रिंग में जो स्ट्रेन होता है उसको shear स्ट्रेन बोलते हैं। ओके, वो सब आगे देखेंगे। यस, यहाँ पर देखिए एक ब्लॉक इज सस्पेंडेड इन अ स्ट्रिंग एंड देन इफ यू सस्पेंड द ब्लॉक इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नहीं था ना, स्प्रिंग होना था। स्प्रिंग तो क्या है, mg नीचे की तरफ और ये इलोंगेटेड रहेगा और इसमें स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ है ना, और स्प्रिंग फोर्स mg के बराबर होगा। इसका मतलब यू कैन से दैट के x नॉट ले लेते इलोंगेशन इस mg, तो x नॉट क्या है इसका, इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग एट इक्विलिब्रियम है, तो इसको कहते हैं इसलिए इक्विलिब्रियम इलोंगेशन, इक्विलिब्रियम इलोंगेशन। मेक इट फास्ट। इट इज नॉट द ओनली ऑसिलेशंस में हम लोग बोले नहीं इधर। हाँ, वो ठीक है, हम लोग थोड़ा अभी बात करेंगे, ऑसिलेट करवाएंगे, टाइम लगेगा ऑसिलेट करना, ठीक है। Okay, we will not release it all on a sudden. We do it very slowly and we bring it in your brain in your business. अभी की बात में अपना लॉ ऑसिलेटिंग कर, ठीक है। This is the situation. तो वो नेगेटिव डायरेक्शन बता देंगे, f equals to minus x. हाँ, x का ऑपोजिट इलोंगेट करते वक्त अंदर की तरफ होना चाहिए। अगर x इस तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ, अगर x इस तरफ है तो स्प्रिंग फोर्स इस तरफ। नेचुरल लेंथ से x इस तरफ डिस्प्लेस हो गया, स्प्रिंग फोर्स इस तरफ है, इस तरफ डिस्प्लेस किया तो स्प्रिंग फोर्स ऑपोजिट है, इसलिए डायरेक्शन बता। क्या? ये पिक्चर में एक स्प्रिंग तो हाँ हाँ, ऑब्वियसली। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग में तुमको, जनरल केस में नेचुरल लेंथ में रहने वाला स्प्रिंग के ऊपर अगर देखा जाए तो ये बात सही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये क्लियर है ना? स्मूथ सरफेस पे रखे हैं और ये एलोंगेटेड है स्प्रिंग।
Find the acceleration of the block immediately after cutting the string. Find the acceleration of the block immediately after cutting the string. And the acceleration of the block immediately after cutting the string. तो सबसे पहले kx by m, ठीक है, kx by m, t by m, both 1 and 2, both 1 and 2 correct है? initial ये तो अभी का टेंशन है, ये तो दिखा है अभी वाला टेंशन है, उसके बाद टेंशन कहाँ है? जैसे स्ट्रिंग कट के तो टेंशन जीरो हो जाती है, एक के साथ बराबर उस समय इनिशियल वक्त का। तो यू कैन सी सिंस द ब्लॉक इज एट रेस्ट, इधर जो kx लग रहा था और यहाँ पर जो t लग रहा था वो तो बराबर होना चाहिए। एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली अभी के वक्त में आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग ओनली kx is acting, तो एक्सेलरेशन इज kx by m ऑब्वियसली, बट kx t के बराबर था इसलिए t by m हो गया। समझ रहे ना? एक्सेलरेशन इज t by m क्योंकि kx और t बराबर है। You can say that acceleration, the removed force divided by, मतलब जितना फोर्स आपने रिमूव किया स्प्रिंग से, balanced अगर equilibrium, if initially at equilibrium, then acceleration will be removed force divided by, okay, समझ रहे ना? removed force divided by mass करने से हमेशा acceleration देगा। देखो ये पॉइंट लिखो, for a spring A is equal to removed force by mass for a spring। हाँ ठीक है, ये तो समझ में, सिचुएशन पहले लिखे हैं इसलिए वो एक्सप्लेनेशन में है, मतलब कि इस फॉर इक्विलिब्रियम में होना था शुरुआत में। अगर कर देंगे और इधर से फोर्स लगाएंगे तो बस एक फोर्स लग रहा है तो एक ही दूसरा सारा फर्स्ट वॉल नहीं दे रहा है फोर्स। तुम एक स्प्रिंग को पकड़ के रखिएगा, होल्ड स्प्रिंग, दूसरा साइड मेरा हाथ में दीजिएगा, एंड आई एम पुलिंग द स्प्रिंग। तुम क्या मेरे साथ आओगे या वहीं रहोगे? क्यों आएंगे? फोर्स लग रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो तुम ऐसा फोर्स, पूरा फोर्स अप्लाई करके खड़े रहे, फिर बहुत बड़ा फोर्स आपको फील होने लगे जैसे जैसे दूर गए, है ना? तो फिर तुम थोड़ी दिए तो मेरा ओके, इलास्टिक को तो तुम लोग करते थे ना, मतलब रबर बैंड खींच के जो खेल होता था और एक बार छोड़ देते थे, दूसरे को लग जाता। तो ये बात, तो ऑब्वियसली दूसरा साइड में फोर्स है, इट्स नॉट लाइक, अच्छा ठीक है दूसरा साइड में अटैच ना करके एक स्प्रिंग को खींच के देखिए कैसे होगा, वो तो इलोंगेट ही नहीं होगा, आ जाएगा, और है ना? तो स्प्रिंग फोर्स ही नहीं है उसमें। ओके, इलोंगेट ना हो के कैसे होगा? सो दिस थिंग इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, इस बार बताइए, पहला क्वेश्चन तो इजी था, अभी ये इलोंगेटेड स्प्रिंग है,
Find the acceleration of the block just after cutting the. Yes. Find A of block In terms of just after, in terms of TMG, just after cutting the string. X minus mg. Answer is not in terms of T by M plus G, T by M ऐसा options है. Okay, I can give you options. First option है T by M plus G. Second, T by M minus G. T by M. अच्छा, T by M to T by M minus G. हम लोग लेकिन जनरली लिख लिए कि रिमूव्ड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फिर मतलब इसमें करने में मतलब ही नहीं है, क्योंकि रिमूव्ड फोर्स तो टी था, टी बाई एम ही आंसर होगा, है ना? और इक्वेशन लिख ही लिया पहले, फिर क्या मतलब है? दिस इज व्हाट. तो इधर देखें तो आपको पता चल गया कि नीचे की तरफ mg t एंड mg नीचे लग रहा था और ऊपर की तरफ kx था. तो बिफोर कटिंग, ये बिफोर कटिंग है, तो इसलिए हम लोग को समझ में आ गया कि ये बैलेंस है, kx इज इक्वल टू mg प्लस t था, तो इसलिए t का वैल्यू kx माइनस mg है ना? t का वैल्यू kx माइनस mg है. और आफ्टर कटिंग क्या हो गया? आफ्टर कटिंग तो kx इसमें, मतलब kx इसमें kx है और mg है ना? तो kx ज्यादा है, mg, kx इज ग्रेटर देन mg. कितना ग्रेटर है? t अमाउंट ग्रेटर है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया kx माइनस mg and that is going to mass into acceleration. kx minus mg is what? T. Therefore t is equal to m. Acceleration is t by m. ठीक है, तो नेक्स्ट पेज. तो नीट का क्वेश्चन था ना, ये वाला स्ट्रिंग को काटा, ये वाला स्ट्रिंग को काटा बीच में, तो find the acceleration of m1 and m2. M2 का G होगा. Find A of m1 and m2 just after cutting the string. M2G by M1. मान लीजिए यहाँ पर कोई टेंशन T होता है, तो वो T कितना होना चाहिए इक्विलिब्रियम में इनिशियली? M2G. और कटिंग करेंगे तो वही फोर्स ना गायब होता है, T by M. ओके, if you मतलब previous question ही है, just I was connecting the previous question with this. इसलिए पहले ये क्वेश्चन दिया, उसके बाद सेम क्वेश्चन नहीं दिए, T की जगह पर M1G आएगा. ओके, बिफोर कटिंग T तो M2G की बराबर है, और आफ्टर कटिंग एक्सेलरेशन, अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन M1 क्या होगा? T. एक्सेलरेशन A1 इज इक्वल टू रिमूव्ड फोर्स डिवाइडेड बाय, क्या लिख सकते हैं हम लोग? मास, है ना? उसका मास, जिसका मास ऊपर है, तो रिमूव्ड फोर्स तो T हो गया, T डिवाइडेड बाय M1. T का वैल्यू क्या था? M1G डिवाइडेड बाय T इज M2G ना, M2G डिवाइडेड बाय M1.
टी तो M2G है ना, तो मैं प्रीवियस क्वेश्चन से कनेक्ट करूं। हाँ, M1G एक्ट कर रहा था, हाँ T एक्ट कर रहा था, ठीक है। लेकिन नीचे वाला ब्लॉक में T M2G एंड T एक्ट कर रहा है ना, वो भी इक्विलिब्रियम में है, तो T का वैल्यू M2G के बराबर है ना, T का वैल्यू M2G के बराबर है। ऐसा नहीं है कि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करके ही करना है, कोई जरूरी नहीं है ऐसा करने का। तुम क्या M2 का फ्री बॉडी डायग्राम देखा, तो नीचे क्या रख रहा था M2, तो फिर T इज इक्वल टू M2G हो गया ना। और ये वाला ब्लॉक में देखे तो क्या था, T नीचे की तरफ अपना खुद का वेट नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ kx। आफ्टर कटिंग का क्या सिचुएशन था, आफ्टर कटिंग ये जो M1 में क्या क्या फोर्स, ऊपर की तरफ kx लग रहा है, नीचे की तरफ M1G लग रहा है, क्या गायब हुआ, T गायब, तो अनबैलेंस्ड फोर्स T ऊपर की तरफ, सही है ना। सो अनबैलेंस्ड फोर्स F is going to be T and that is going to be M1 into A and T का वैल्यू क्या है, M2G is equal to M1 into A। आप समझ में या नहीं, ठीक है। 1 is equal to 5 kg, M2 is equal to 8 kg और यहाँ पर 65 न्यूटन फोर्स अप्लाइड। Spring constant K is equal to 2000 Newton per meter. Find elongation of spring. Find elongation of spring at a steady state. Steady state मतलब blocks are not oscillating. Blocks are not oscillating. ये मतलब है steady state का। .5 into minus meter. .5 into minus 12 millimeter है ना। अच्छा ठीक है, स्प्रिंग फोर्स कितना आया, 5 into 5 kx. ठीक। Five by 2000.
X is equal to M1A भी तो कर सकते हैं ना, सबसे इजी इसमें लगाने के लिए ना स्टेडी स्टेट है। तो पूरा सिस्टम में स्प्रिंग फोर्स इंटरनल है तो हम लोग M1 प्लस M2 ले लिया और 65 न्यूटन, दोनों एक एक्सेलरेशन में जाना चाहिए, स्टेडी स्टेट बोला है इसलिए हम लोग ऐसा किए। ठीक है, both will move at same acceleration. 65 is equal to M1 plus M2 into n. तो 65 is equal to 13 है ना, 13 है, एक्सेलरेशन कितना मिला 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब M1 के ऊपर खाली लग रहा है kx है ना, एंड वो इस एक्सेलरेशन में जा रहा है, therefore we'll say that kx is equal to M1 into 5। M1 कितना दिया है 5 kg, तो 25 न्यूटन हो गया। k का वैल्यू है 2000। 12.5 तो सही एकदम 12.5 मिलीमीटर ही आ गया। 25 का था, 2000 ने बोला था, 25 का था, 10⁻³ मतलब 12.5 मिलीमीटर। तो x is obtained as 25 divided by 2000 मीटर। इसका मतलब 12.5 into 10⁻³ मीटर, 12.5 मिलीमीटर M2 लेके करेंगे तब भी एरर नहीं होगा। कैसे एरर होगा? एकदम सेम आएगा। kx minus 65 equals to 8 into 5 होगा, तो बस 65 उधर चला जा रहा है तो 1 सही है, समझ गई? नहीं होगा, उल्टा तुम तो फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट किए, फर्स्ट हम लोग को किया हुआ क्वेश्चन में कितना मास था 8 kg, इस तरफ कितना था और किस तरफ एक्सेलरेशन इस तरफ है और इस तरफ kx है, kx minus 8 into 65 minus kx। अनबैलेंस्ड फोर्स कहाँ है वही तो देखना है पहले। kx minus 65 ma होगा तो होगा क्या, तुम बोलिए क्या kx 65 से ज्यादा है क्या? तो कैसे होगा? एक्सेलरेशन तो हॉरिजॉन्टली सीधा मतलब सीधा इस तरफ हो रहा है, जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ से। अच्छा तुम सोचे कि दोनों इलोंगेटेड है, दोनों इस तरफ आएगा ऐसा ना, ऑसिलेशन वाला सोच रही है। नो, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाया ना इधर, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगाया है। थ्री kg, 6 kg, 2000 Newton per meter, 3000 Newton per meter. Find the elongation of 1 and 2 springs. Find elongation of both springs. Elongation of both springs at steady state. हाँ अब पूछेगा ये रीडिंग, इसका मतलब ये वेइंग बैलेंस होता तो उसमें टेंशन का वैल्यू आएगा। ठीक है, ठीक है ना, अगर उसका ये वे बैलेंस स्प्रिंग, अगर उसका स्प्रिंग बैलेंस होता है ना, उसका रीडिंग क्या है, अपना टेंशन का वैल्यू है, तो kx को टेंशन से इक्वेट कीजिएगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में भी kx को टेंशन से इक्वेट करना था। हाँ हाँ, रेस्ट में होगा क्या, एक साइड में 6 kg और 3 kg में रेस्ट में होगा, 6 kg नीचे जाएगा, 3 kg रहेगा, तो जो मोशन है वैसा ही है। अरे जो स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है ना, सेम, तुम टेंशन की जगह पर kx डाल दीजिएगा।
You can do it. करो. हाँ जैसे टेंशन बना, टेंशन का इक्वेशन याद नहीं है? याद है M1 और M2 वाले में टेंशन का इक्वेशन? इतना मेहनत करके फाइनल ही तो यही कर लिए. ओके. अरे तो एक जगह टेंशन है और स्प्रिंग के थ्रू जा रहा है तो स्प्रिंग के अंदर जाके वो स्प्रिंग फोर्स हो गया. तो यहाँ पर दो डिफरेंट स्ट्रिंग नहीं है, तो सेम इज स्ट्रिंग. अरे स्प्रिंग के अंदर एक स्प्रिंग तो पकड़ा किया होता तो स्प्रिंग में जो टेंशन है वही फोर्स स्प्रिंग में डेवलप होता है. अदरवाइज अनबैलेंस हो जाएगा ना, सेम नहीं हो तो. हर जगह पर सेम रहना चाहिए ताकि वो सिस्टम बैलेंस में रहे. ठीक है, तो फिर इसका मैसेज सिस्टम मान सकते हैं. Yes, quickly do it. 4 सेंटीमीटर आ रहा है क्या? 4 सेंटीमीटर. ठीक है. सर 0.03 3 सेंटीमीटर एक है ना, 0.03 एंड and 0.04. 0.04. ठीक है. करके का हो जाएगा टेंशन एंड देन टेंशन को kx. ओके, बस वो शॉर्टकट तुम लोग याद रख सकते हैं. रिप्लेस स्प्रिंग विद अ स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन, देन इक्वेट टेंशन टू kx. तो ये वाला टेंशन इधर क्या है, ये T1 है और ये 2T1 है, या T एंड 2T ले सकते हैं, सही है ना. तो T का वैल्यू आपको पता है 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 into g. You remember this, right? So 2000 x is equal to 2 into 3 into 6 to m1 m2 divided by m1 plus m2 9 into g. सही दिखा क्या है ना? सही लिखा ना? ठीक है. 1316 18 by 9 is 2 सेंटीमीटर आ रहा है. तो Yes, sir. 3 सेंटीमीटर कैसे मिला, एक बार बताइए मुझे. तुम भी गलती की, ऑनलाइन में कोई एक तेरा मतलब कैसे गलती की है यार, सब मतलब गलत कैसे इक्वल हो गया. ओ 60 कर लिए. हाँ सर. अरे तो यहाँ बहुत लोग कर लिए ये चीज. तुम भी कैसे कर लिए. सब लॉजिक मुझे थोड़ा समझाइए, क्यों क्या फील था इसको करने का. T is equal to 30 तो T जरूर 30 भी तो लगता है. अगर इस पे 60 लग रहा है तो ये एक्सीडेंट करेगा भी, ये एक्सीडेंट करेगा. अगर इसमें तेरा आंसर है सही होगा, ये ऊपर की तरफ 60 और नीचे की तरफ 60, तो ये एक्सीडेंट नहीं कर रहा, लेकिन सेम 60 इस पे लग रहा है, ये एक्सीडेंट कर रहा है. स्ट्रिंग विल स्नैक. मेरा गलती का मतलब मतलब जो इंटेंस लेवल ऑफ सीरियसनेस एक्सप्लेन कर रहा था कि इधर 60 ही लग रहा होता टेंशन, तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा, लेकिन दूसरा ब्लॉक तो एक्सेलरेट करेगा. So one thing is accelerating, the other one is not accelerating. How it is possible? दोनों T सेम होगा, दोनों T सेम होगा,
और वो टी का वैल्यू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 to m2 into g होता है। ठीक है, ओके। टी का इक्वेशन हम लोग सीखे हैं ना पुली में, पुली सिस्टम है ना, टी का इक्वेशन सीखे हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है आप लोगों से इस तरह का आंसर आप कर लेते हैं। दिस इज पुली, सो पुली विल बी इज एन एक्सेलरेटिंग सिस्टम। 40 by 2000 60 by 3000। ठीक है, तो फर्स्ट वाला x2 था ये, ओके ये x2 था सेकंड स्प्रिंग के लिए। x2 का वैल्यू आ गया 2g में, एक बार और देखता हूँ, 2 कैंसिल हो गया, 2 मिलीमीटर आ रहा, 20 मिलीमीटर Yes sir। जी ओके, मतलब 20 मिलीमीटर मतलब 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर मिला, यस। एंड देन x1 का 2t is equal to, ओके 2t कर लेंगे, ये जितना भी है मतलब 3000 into x1 is equal to 2t, ओके ये जितना मिला उसका डबल, मतलब 4 into 3 into 6 divided by 9g। ठीक है, और ये सॉल्व करने के वक्त x1 भी आ गया, x1 कितना मिला 2.67 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया? पहले क्या गलती किया वो समझ में नहीं आया तुम्हें? देखिए सबसे बड़ा ब्लंडर किया है पहले में, ये क्या क्या मार्क्स था बताइए, ये कितना मार्क्स था, ये 3 था, ये 6 था। अगर इस टेंशन अगर 60 होता, अगर 60 होता, गलत है, गलत लिखा है इसलिए, अगर टेंशन 60 होता तो नीचे की तरफ 6g वो भी 60 न्यूटन है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब ये 60 इसमें भी लगता एक स्ट्रिंग की थ्रू आउट, और इधर 3g लगता, ये चीज ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा, दूसरा नीचे एक्सेलरेट नहीं करेगा। हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? अगर ये ए में ऊपर आएगा तो ये सेम ए में नीचे आएगा। अभी पता चला कि ब्लंडर है, सही है ना? हाँ हो जाएगा, कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, किसी भी हालत में नहीं होगा। ऐसा है कि इसमें कोई अननोन टी है, तुम्हें अगर इक्वेशंस याद नहीं है तो ये टी है, ये भी टी है, और तुम कह सकते हैं कि 60 माइनस टी इज इक्वल टू 6a और t माइनस 3g इज इक्वल टू 3a, और t अगर निकालना है तो तुम क्या कर ले, यू हैव टू सबट्रैक्ट देम, ओके सबट्रैक्ट कर लीजिए, t आ जाएगा 60, 30 ले लीजिए, 3g मतलब 30, तो यू सबट्रैक्ट t आ जाएगा, t माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 2 माइनस 1 कीजिए, 2 माइनस 1, तो क्या मिलना चाहिए, वही होगा टी, उसमें से ए का वैल्यू लेकिन नहीं पता है, तो फिर ए भी निकालो, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, हाँ ए भी कैंसिल हो जाएगा। ओके इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके कैसे भी सॉल्व करके टी निकालो, ओके दैट्स इट, यू कैन डू दैट। ठीक है, यस
Okay, give me a question paper. So before I start discussing, how many are expecting 180? Wow. Hello, how sad. अच्छा चार्जर I counted 1 2 3 4 हाँ मिलाया नहीं तो कैसे बोल दे 180? आंसर की राय नहीं है लेकिन होना चाहिए अच्छा सही बोला जी वेरी दैट्स द कॉन्फिडेंस आई वांट आंसर की नहीं है लेकिन मेरा सही है ओके और बाकी ना 176 आगे 176 একটা ছেড়ে দিও হ্যাঁ 176 কোনটা ছাড়লি যদি কোনো ইজি জিনিস ছেড়েছিস कौन सा मैं ये भूल कर दी प्रॉपर प्रॉपर्टी पढ़ता और लिमिट आपके ना हम 75 175 দুজনে তো 175 কোথায় এক একটা কোথায় ভুল হয়েছে সেল চ্যাপ্টারে ভুল লেখা কিছু বলা নেই সেখানে নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা আছে না আমরা ডিসইন্টিগ্রেট আমি মানলাম তো বুঝে যায় সেগুলো বুঝে যায় কি অবস্থা আচ্ছা নিউক্লিয়ার কোর তো এনসিআরটি টা পড়তিস এনসিআরটি না পড়লে আমার নোটসটা পড়তিস এটা আমার এনসিআরটি পুরো এই কনফিডেন্স ওভার কনফিডেন্স का अच्छा ठीक है चलो let's discuss this paper. I expected many people getting 180 এর এখানে দেখি 4 জন হাত তুলেছে 180 मैम आंसर की तो आंसर তো अरे एनसीईआरटी ने एनसीईआरटी খুঁজে খুঁজে বার কর হ্যাঁ এরর চেকিং হচ্ছে না see whenever an exam is taking place don't wait for the answer key do your error checking module is there NCERT is there and telegram is there very good telegram এ তো পেপারে কোড চলে আসে না আগে আসে না পরেই আসে আমিও ওই গ্রুপে আছি করবি আছে হ্যাঁ ও একটা আছে চ্যানেল আমাকে বুঝতে পারি না ওরা ওদেরই বল ওরা লিংক পেয়ে গেছে there are 2 channels Akash channels where there is the question paper as well as the answer chai ho so you in that group you get a lot of question papers also you know different type of okay listen if anybody finds an Akash channel group in Telegram you can actually go into that group join the group and there are a lot of papers from all over India Akash not only Kolkata Akash but all over India whatever branches of Akash are there they will actually post the question papers. Okay, so you can actually take those question papers down and practice it. So you'll have a bunch of papers to practice for. Show ache, final test series. Intensive ache, show ache. Now, anyways, we have planned. Anyways, I am compiling a revision papers. After everything is said and done. Revision papers compile. হবে মানে ওটা হবে যখন আমি শেষ করব ওটা করা হ্যাঁ আমারটা জানি when I get free time. Okay. Chalo. Let's discuss the paper and then we finish our cell. Please cell cycle for God's sake because we have to start living world also. Okay. Acha, which of the following is not found in powerhouse of the cell? ATS ribosome, second option. Which of the following cell organelles is not the part of endomembrane system? Mitochondria. Chromatophores are seen in cyanobacteria. See, many questions have come from NCERT. NCERT पूरा पेपर ही NCERT का ही था. Just certain options came from module because वो SCR का एक option था odd one out.
हाँ एलिमिनेशन से तो वही जाएगा वो, ठीक है। नहीं, मॉड्यूल का एक क्वेश्चन पूरा आया था कि होस्ट इम्यून सिस्टम से किसको कौन बचाता है। अरे हॉटस्पॉट से अनेक क्वेश्चन है इससे कॉमन। बताते हैं। Okay, centriole like structure that gives us cilia flagella and basal body. NCERT line only this is. কুড়িটা ক্যালকুলেশন করিয়েছিলাম আমি 19টা। এনসিইআরটি তে তো কোনো ক্যালকুলেশন নেই। টোটাল নাম্বার অফ মাইক্রোটিবিউস এ আছে 20 plus 2 See, if they would have asked total number of peripheral doublets, then it will be 9. Then not 11, 9. Because the middle parts are singlets, they are not a pair. Right? Total number of microtubules means singlet plus the doublets added up. So 9 into 2 plus 2, 18 plus 2, 20. Don't worry, এরকম মিস্টেক সিআরজিও করেছে। 11 জন 11 11 মানে ডাবলেটস 11 বাহ। আচ্ছা, in the fluid mosaic model of the cell membrane, protein are represented icebergs in the sea of lipids. This I had told in the class only ki erokom একটা statement আছে, okay? কি lipids are arranged in a continuous ये क्वेश्चन ये मतलब अगर रहेगा तो राइट होगा कि रॉन्ग? पहली बात तो फ्लूइड और मोजाइक जब हम बोलते हैं तो मोजाइक पैटर्निंग में कभी प्रोटीन कंटीन्यूअस शीट में अरेंज नहीं हो सकता। ये तो प्रोटीन्स का बोला है। मेरे को एक बात बताओ, अगर प्रोटीन्स एम्बेडेड इन अ सी ऑफ लिपिड्स है तो लिपिड तो कंटीन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आता है वहां पे। तो ट्रांसमेम्ब्रेन तो लिपिड लेयर के बीच में से जा रहा है, तो वहां पे तो डिसकंटिन्यूअस हो गया लेयर ना, तो कंटीन्यूअस शीट नहीं होता। दोनों के केस में कंटीन्यूअस शीट नहीं होता। Proteins are sandwiched between हाँ, ये एक्चुअली ये दूसरा मॉडल को एक्सप्लेन कर रहा है, नॉट इवन डेव्स एंड डैनियल। कोई और मॉडल था जिसने बोला था कि प्रोटीन लिपिड के बीच में। आफ्टर दैट डेव्स एंड डैनियल केम इन विद द मॉडल कि प्रोटीन लिपिड प्रोटीन सैंडविच मॉडल। तो यहाँ पे तो सैंडविच मॉडल भी जो प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ लिपिड्स, ये नहीं होता है। हाँ, और भी पेरिफेरल है, एग्जैक्टली। अच्छा, ओके, सेलेक्ट द ऑड वन आउट रिस्पेक्ट टू मेसोसोम्स, help in formation of inclusion bodies. Omnis cellula is cellula means new cells arising from pre-existing cells. First option. 80s ribosomes have the subunits. Very difficult question. 60s and 40s. है मैंने seriously अच्छा ये joking, thank God. Okay. Organelle in eukaryotic cell, that is an organization like a cartwheel, is surrounded by amorphous pericentriolar material. Okay, then they match the following. Anton van Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Rudolf Virchow is option 4. Robert Brown is option 2, and D is option 1. Mane Singer and Nicholson option 1. Huh? Answer is option 1. Okay. Yeah, A3, B4, C2, and D1. Okay. Semi-autonomous cell organelles present in plant cells are chloroplast and mitochondria both. Nucleus cannot find तो नीचे एक क्वेश्चन जिको बोले न्यूक्लियस কেন হয় না অটোনমাস, কেন হবে? আরে কেন হবে না মানে কেন হবে? আর নিজস্ব প্রোটিন সিনথেসিসও করতে পারে। হ্যাঁ, ওটাকে তো অটোনমাস বলে। When a cell organelle can perform every function on itself without taking the help of the cell, তাহলে ওটা autonomous হবে। Nucleus never takes help from anywhere. হ্যাঁ, it is the only autonomous organelle. Okay, মানে it is autonomous, then you can say peroxisome itself is autonomy because হ্যাঁ ও তো নিজের ফাংশন যা আছে ওটাই করে, কারো তো হেল্প নেয় না। So there are okay, next.
ER এর যদি কন্ট্রিবিউশন না থাকে তাহলে তো এনজাইম ফর্মেশন হবে না, কিন্তু পেরক্সিসোমের ব্যাপারটা হচ্ছে না, মানে ওর অ্যাকচুয়ালি ক্যাটালেস অক্সিডেজ এগুলো আছে। পেরক্সিসোমস বেসিক্যালি মাইক্রোবাডিজ কি হয়, মাইক্রোবাডিজ আর ডেভেলপ ফ্রম ইয়ার, বাট when it comes to functioning now নিজের ফাংশনিং নিজে করতে পারবে। ডিটক্সিফিকেশন অফ হাইড্রোজেন পেরক্সাইড ও নিজে করছে, তো হেল্প নিচ্ছে না। ফাংশনিং এর উপরে হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ইটস বেসড অন ফাংশনিং অনলি। ও কি সিনথেসাইজ করতে পারছে কি করতে পারছে না। লাইক ইন কেস অফ ডিএনএ রেপ্লিকেশন, মাইটোকন্ড্রিয়া and chloroplast are autonomous because it can replicate its own DNA without taking help from the cell. But in protein synthesis, there are certain amino acids that it is required from the cell. Without that, you cannot. Okay, how many centrioles are present in a centrosome? Semi-autonomous, yes. Acha, which of the following statements is incorrect with respect to cytoskeleton involved in production of ATP? Baba, মানে জায়গা ছাড়েনি মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, very nice. पूछ लेते आप जी। कोई बार उल्टा करे प्लीज नीट নিতে হবে তোদেরকে। Okay. Select the incorrect statement with respect to vacuoles. Chloroplast does not facilitate the transport of ions into the vacuole. That's the incorrect one. In human beings, membrane of RBC has approximately 52% protein, 40% lipids. And then 116 match the following: chloroplast, thylakoid, plasmodesmata connects cytoplasm of adjacent cells. Mitochondria is cristae and middle lamella is calcium pectate. Okay, so I think option 1 should be correct here. Function of packaging of materials and the delivery to intercellular targets as Golgi body, Golgi apparatus. Total number of microtubules present in the eukaryote flagella is 20. Okay, which of the following structure found in this is a question from the module itself. I think one of the section B or C that hides the bacterium from the host immune system. That's capsule. Okay, a British zoologist, please, Theodore Schwann. Don't even look at the next of the statement. Okay, mane aar kichhi nahi basically. Okay, the type of ER which is found in the cells that are actively involved in protein synthesis and secretion, continuous with the inner membrane of nucleus. Okay, sorry, inner now, outer membrane. Sorry, tale eta hobe associated with ATS ribosomes. Gaya tumhara 175. Sorry, 128. Oh, sorry. আমি এখানে ভুলেই গেছি। Shape of nerve cells, branched and long. Plastid involved in storage of fats, elioplast. Select the wrong statement about chromatin does not get stained with any dye. Choose the odd one with respect to functions of SCR, glycosidation of lipids. That would be wrong because it is done in Golgi process. Acha, flagella in bacteria appear to arise as filamentous extensions from the cell wall. A same line is given in NCERT. Okay. Okay, cis and trans phase of Golgi apparatus are entirely different but are not interconnected. Okay, so this is wrong. Golgi apparatus remain in close association with the ER. That's correct. Cistern in Golgi apparatus are stacked parallel to each other. That is also correct. So B and C, only A is incorrect. Gas vacuoles found in all aquatic eukaryotes, that's wrong, it's prokaryote. Are membraneless, yes. Provide buoyancy to the cell, yes. So B and C are true. Eta type of ER, that is ATS ribosomes, associated ATS, technically 60S.
All living organisms are composed of cells and products of cells. Reason new cells arise from question ছিল এটা। এটা নিয়ে অনেক ডিসকাশন হয়েছে, বলে এটা কি অপশন হবে? অপশন 2 একদম। There is no explanatory reason for if they would have given a reason like tissues are formed by grouping of cells, that would have been option 1. তাহলে হাফ এন আওয়ার ডিসকাশন হয়েছিল। হ্যাঁ আচ্ছা, nuclear envelope in the nucleus separates nucleoplasm from cytoplasm. Microbodies contains various enzymes. Select incorrect in respect to eukaryotic cell. Plasma membrane is symmetrical in nature, asymmetric in nature. Okay, plasma membrane अगर symmetric होता तो उसको कभी fluid mosaic नहीं बोलते, ठीक है? Mosaic patterning means খাওয়াটা বন্ধ কর, তখন থেকে মুখ চলছে। Not in my class. Plasma membrane is symmetrical in nature. Mark the wrong statement. The cell wall of bacteria provides a strong structural support to prevent them from bursting or collapsing. That's true. Bacterial cells can undergo lysis in presence of penicillin. Blue-green algae. Bacterial cells can undergo lysis in presence of penicillin. That is true. If we actually can undergo, to yes, because penicillin does not allow cell wall formation, but except mycoplasma. लाइसिस मतलब बर्स्ट। हाँ, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन या बर्स्ट। तो अगर सेल वॉल नहीं रहेगा, पेनिसिलिन तो डज नॉट अलाउ सेल वॉल फॉर्मेशन, या सेल वॉल को वो क्रॉस लिंकिंग को तोड़ देता है, नैग एंड नैप का। तो इन दैट वे व्हाट विल हैपन, एनी काइंड ऑफ केमिकल कैन एंटर द सेल एंड कॉजेस बर्स्टिंग। ओके, तो causes lysis in presence of penicillin because penicillin works on cell wall. So this is true in nature. Technically it is true. हाँ, कैप्सूल नहीं, पेनिसिलिन सेल वॉल पे काम करेगा। हर बैक्टीरिया का कैप्सूल नहीं होता। हाँ, उनका होता है, उनका पूरा लाइसिस हो जाएगा। ब्लू ग्रीन algae or eukaryotic cells is wrong. Mesosomes are found in gram-negative bacteria only. Yeah, so this is false. So basically A and B. Where we come from? C and D. Wrong statement तो अच्छा C and D है। हाँ? All bacteria नहीं। Some mostly एक टाइप के बैक्टीरिया में तो कुछ यहाँ पे रहता है। नहीं, यहाँ पे ओनली लिखा है ना, आप ओनली नहीं बोल सकते। वो सब जरूरत नहीं है। अगर ओनली ग्राम पॉजिटिव बोला तो भी गलत ही होगा। हाँ, देखो मेसोसोम, मेनी बैक्टीरिया कंटेन मेसोसोम। अब कुछ में होता है कि जैसे कि उसमें भी अगर हम देखें कि ग्राम नेगेटिव में कुछ ज्यादा होता है, ग्राम पॉजिटिव में कुछ बैक्टीरिया में होता है, लेकिन आप सिर्फ ओनली यूज करोगे मतलब आप उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया के कैटेगरी में पुट कर दे, वो होता नहीं। Mesosomes can be found in mesosomes are found in E. coli. E. coli is a gram-negative bacteria. ठीक है, but Clostridium is a gram-positive bacteria. Bacillus is a gram-positive bacteria. মাছটা বন্ধ করো, মাছের ভেতরে আবার খাবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে, बोला है ना, नेगेटिव होगा, ग्राम नेगेटिव। साइनोबैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव, ज्यादा पैरासाइट कॉज करते हो वो भी ग्राम नेगेटिव ही होता है क्योंकि उसमें कैप्सुलेटेड फॉर्म ज्यादा रहते हैं। जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ग्राम नेगेटिव है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ग्राम नेगेटिव है, तो ये सारे लैक्टोबैसिलस ग्राम नेगेटिव। ठीक है, mesosome is a complete characteristic of prokaryotic. Now it does not mean कि only this type will have mesosome, that type will not have mesosome. Okay, तो this statement overall is wrong. Okay, अगर बोलता है कि mesosomes are found in gram negative bacteria, ठीक है, only लिखा दिया अच्छा बोले प्रॉब्लम टा होगा। अगर mesosome is found in gram negative है तो only नहीं भी लिखता तो करेक्ट कर। क्यों नहीं, ग्राम नेगेटिव में वहां पे क्या लिखा है कि नॉट फाउंड इन ग्राम नेगेटिव, बोला है कि ग्राम पॉजिटिव में फाउंड है, मतलब ज्यादातर ग्राम पॉजिटिव में रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ग्राम नेगेटिव में नहीं रहता। हाँ, ये इसका इंटरप्रिटेशन है कि अगर वो नहीं रहता ना तो वहां पे मेंशन कर देता कि मेसोसोम इज नॉट एट ऑल फाउंड इन ग्राम नेगेटिव। तो मेंशन अगर नहीं किया है तो हम लोगों को बाय डिफॉल्ट ये पकड़ना है कि वो है,
दोनों में है, किसी में ज्यादा स्पीसीज में है, किसी में कम में। ठीक है। न्यूक्लियर पोर्स आर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर विच आर फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस के। अच्छा तू ही फीचर डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। আমি সেল সাইকেল পড়া দিচ্ছি, সেল সাইকেলের এক্সাম দিচ্ছিস তুই সেলে ফিচার। হ্যাঁ মানে ফিউশন আর ডিসইন্টিগ্রেশন এক হয়? হ্যাঁ না, disintegration মানে nuclear membrane is breaking down, disintegrating সব। I told you one thing, overthink করবি না, do not overthink। এই যে overthink এর result হচ্ছে 175। ओवरथिंकिंग की वजह से हुआ है। मैं इधर से इधर लेके जाऊंगी उसको, सीधा पूछा है बोलो यार आंसर करो। नहीं इसका ये होना चाहिए था, ये उसका डैड था, डैड के ग्रैंडफादर ये थे, ग्रैंडफादर में वो डिजीज था तो इधर भी होगा। अरे ये क्या सीधा पूछा है, बोलो। डू नॉट ओवरथिंक इन सच क्वेश्चंस। Feature which differentiates cells of onion peel and human cheek cell. If it is not cell wall, then it is absence of organelle with the cartwheel appearance. क्योंकि टेक्निकली एनसीईआरटी में सेल वॉल के बेसिस पे ये बोला है, लिमिटिंग डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर और आउटर बाउंड्री सेल वॉल है ये सब। लेकिन अगर वो नहीं हुआ तो ये होगा आंसर। अच्छा साइज ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। Lack of structure in the former which acts as a barrier for transport of molecules है। अच्छा size of typical eukaryotes, how many of you have answered 1 to 2 microns? मैंने काम को छोड़ दिया हुआ। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ प्रोकैरियोटिक, बाकी ये देख कि यूकैरियोटिक कहाँ नंबर लगाया कि क्वेश्चन पास। तुम्हें दिशा आई हॉस्पिटल ये छोड़ दिया। क्वेश्चन पूछी यूकैरियोटिक यानी यूकैरियोटिक Do not put the प्रोकैरियोटिक लिखा। वो टिपिकल कोई आंसर तो यूकैरियोटिक देखनी है, जेरा छीनो ही ना क्वेश्चन। মানে এই आंसर বলে সেল চ্যাপ্টারে এই বাবা সেল সাইকেলে if somebody gets 180 in সেল সাইকেলে আমি খুব খুশি হব। मैं स्निकर्स दूंगी जिसको सेल साइकिल में 180। That's a challenge, sneakers। ना ना এইটা स्निकर লাগে চল। That's called okay, that's called sneakers। Hey, let me finish this, then we have to finish cell cycle also, please। আর আমি টাইম ওয়েস্ট করতে পারছি না। Outermost layer of bacterial cell of glycocalyx cell theory was given by very difficult question। Okay, extremely difficult। अच्छा function of embryo, क्योंकि by any chance Schleiden and Robert Hooke ये ছিল নাকি any chance মানে বলা যায় না ও prokaryotic পড়েছে। somebody can use Schleiden and Robert Hooke। function of membrane bacteria is to help in attachment to host tissue। which of the following cell organ is double membrane bound? chloroplast, polysome। पीली तो तुम्हारा वो क्या बोलते हैं जो बैक्टीरिया को अटैच करता है, वो होस्ट टिश्यू से अटैचमेंट नहीं करता है। हाँ हाँ वही तो बैक्टीरियल अटैचमेंट कर देता है। अच्छा पॉलीसोम कंटेन्स मेनी राइबोसोम्स एंड a single mRNA। enzymes and electron carriers for the formation of cellular energy are present in inner membrane only। anybody wrote outer inner membrane both? Thank God। select incorrect statement। egg of ostrich is the largest, okay। a ribosome is membraneless organelle, correct। shape of cells may vary with function। fourth option, genetic material is present in well-defined nucleus in both prokaryotic eukaryotic। 144 match the following। option 2, which of the following layers in plant cell is capable of growth? That's primary cell wall, direct NCERT question।
ATA sir একটা ইঞ্জিন তো মেট্রিক কোনটা কোনটা succinate dehydrogenase is present towards the matrix side but attached to the membrane. মানে ওই যে FADH2 formation happens in the membrane side. Krebs cycle FADH2 formation occurs in the membrane side. মানে near that succinate dehydrogenase. বাকি সব enzymes are there in matrix, but succinate dehydrogenase enzyme that forms FADH2 from succinic acid to fumaric acid, when that conversion ওটা membrane হয়। তুই ওকে এক্সপ্লেন করিস না। আমি জানি না, I heard something very bizarre. When a chromosome is observed at anaphase, it is found that the p-arm, whenever they're mentioning p-arm, that means it's either submeta or acrocentric. Okay. नहीं, इसका जब बोलते हैं कि p-arm of the chromosome has a satellite अगर बोल रहा है ना, तो अगर वो आर्म का नेम मेंशन कर दे रहा है, मतलब ये एक तुम्हारा सबमेटासेंट्रिक नहीं तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम का बात कर रहा है। क्योंकि अगर बोलता कि वन ऑफ द आर्म्स हैज अ सैटेलाइट, ओके, वन ऑफ द आर्म्स, ओके, अब वहां पे पी क्यू नहीं मेंशन किया है, मतलब हम लोग मेटासेंट्रिक पकड़ सकते तब। तो हियर द आंसर शुड बी that the length of the arm which has no satellite is comparatively longer, मतलब QR. Okay. Statement 1, every chromosome essentially has a primary constriction called satellite. That's wrong. Sometimes a few chromosomes are staining secondary constrictions at random locations. That is also wrong because secondary constriction non-staining regions. Okay, in case of dash chromosome, the centromere is situated close to its end. It's acrocentric, not telocentric. Which of the four given structures present in chromosome prevent the shortening? That is telomere. Shortening के prevent करे because every time a division happens ना, telomere size एक to reduce करता था. So basically telomere to a certain extent slows down the process of aging by this far. चलो. Where were we in the cell cycle? They have deleted all notes. I was starting Packitine or Packitine, Packitine. Okay. Packitine. So let's see if the Packitine goes. Okay. So right at this moment, we have 2n is equals to 23 pairs of chromosomes. Okay, 23 pairs. That means number of bivalents are 23. Number of bivalents is equals to 23. Okay. Then number of chromatids. Okay, per bivalent. Number of chromatids per bivalent. How many? Per bivalent is 4. Then the total number of chromatids. Yes, 23 into 4, which will be equivalent to 92.
right? And yeah, so and DNA we have here is basically 4C. So here, if you look at the diagram properly, I have given you recombination nodule. There is a synaptonymal complex present, and now you can very clearly see the chromatids. So we can see bivalent tetrads very clearly in the packaging because the chromatin has further shortened and thickened into chromosomes. So the the arms of the chromosomes become very visible, and we do observe the tetrad formation here. So what happens in packaging? The first thing is further shortening and thickening of chromosomes is seen. Thickening of chromosomes occur. Okay. Now it is observed that each bivalent okay possess 4 chromatids. Each bivalent possesses 4 chromatids, thus bivalent tetrads are visible. Okay, 4 chromatids, thus bivalent tetrads are visible. Bivalent tetrads are visible. Okay, each bivalent here, each bivalent here each bivalent here possess 2 centromeres. Okay, how many kinetochores? 4. 2 centromeres, 4 kinetochores. Okay, that way we can also write. They can ask me numerical values like if this is the thing. Then in the entire 423 bivalents, how many centromeres? If there are 23 bivalents, how many centromeres? 46. So 23 into 2. Yeah. So these are all your numerical questions. Each bivalent here possesses 2 centromeres and 4 kinetochores, we can say. So that is the thing. Now, next, bivalents have 92 molecules. 4C matlab equivalent to 92 molecules. Okay, 92 molecules of DNA. That much we will write. Okay. So basically per bivalent we have 4 molecule of DNA. 4 chromatid है तो 4 molecule होगा तो equivalent है. Okay. So next क्या है? The bivalents are covered by synaptonymal complex. The bivalents are surrounded by synaptonymal complex. By synaptonymal complex. Okay. The non-sister chromatids of the maternal and paternal chromosomes consist of recombination nodules at certain regions. Okay. So we have to write this very specifically. The non-sister chromatids. The non-sister chromatids of maternal and paternal homologous chromosomes. Maternal and paternal homologous chromosomes. Okay, attach at certain regions where recombination nodules are formed. আরে এখানে একটা সেন্ট্রোমিয়ার এখানে একটা সেন্ট্রোমিয়ার kinetochores are laterally placed. Centromere is never fused. Therefore, if it is mitosis, each chromosome will have a single centromere. There is no pairing. But if it is meiosis, when a bivalent is coming together, the centromeres don't fuse. The centromeres are separate. But it comes as one. Yeah. আমরা তো পেয়ার কোথায় ফিউজ হয়?
We are talking about two individual chromosomes coming together as a pair. But this chromosome has a centromere here, this chromosome has a centromere here. The centromeres are not fusing, they are separate. But they are together. কিন্তু কার্নেটের উপরে একটা নিচে একটা উপরে একটা নিচে একটা আরে বাবা একটা ছেলে একটা মেয়ে আছে, মেয়ে একটা বেল্ট পড়েছে, ছেলে একটা বেল্ট পড়েছে, বেল্ট ফিউজ হয়ে যাবে পেয়ার হয়ে যাবে। তো ওটাই তো বোঝাচ্ছি। একটা ছেলে প্যান্ট শার্ট পরে বেল্ট পরেছে ব্রাউন কালার, একটা মেয়ে এরকম একটা ড্রেস পরেছে, মাঝখানে একটা এরকম ডিজাইনার বেল্ট পরেছে, লাইক আ কর্সেট বেল্ট। Kind of like a belt, একটু মোটা টাইপের হয়, it's like a fashionable belt. Okay, they are coming as a couple. Okay, so I don't know what that's next. Okay. So if that pair is hugging each other, will the belts fuse? তাহলে ওটাই হচ্ছে bivalent with two centromeres. এত দিল না বেল্ট মারতে পারছি না। Oh, Baba. Okay, the non-sister chromatids of maternal and paternal homologous chromosomes attach at certain regions. At certain regions which are covered by recombination nodules, which are surrounded by which form recombination nodules, which form recombination nodules. Okay, this recombination nodule is made up of a complex of enzyme called recombinase. Actually, recombinase is a complex of enzyme. শুধু একটা enzyme না. Okay, so recombinase has helicase enzyme. So then you have ligase enzyme. Then you have the polymerase enzyme. Those things which attach things. Helicase and ligase basically. Because you have to cut the DNA and some nucleases also, because you have to cut the DNA, unwind it, cut it, then attach here and there, and then again join it. So you have these three type of enzymes present in recombinase. So it's a complex of enzyme. So the nodule consists of a complex of enzymes called as recombinase. Enzymes known as recombinase. Now recombinase, with the help of this enzyme, genetic segments are exchanged between the maternal and paternal non-sister chromatids. Okay, with the help of this enzyme, genetic segments are exchanged between maternal and paternal chromosomes, between maternal and paternal chromosomes. Okay. So when we are talking about genetic segments, I'm talking about the gene or the allelic, whatever alleles is present of the same gene, they're interchanged. Because suppose one particular chromosome is all capital dominant alleles, another has recessive alleles. Now you do exchange, one dominant goes into that chromosome, one recessive comes here, then the combination changes. So if suppose capital A goes there and small a comes here, you are getting capital A and small a only, but the segments have changed. Okay, now instead of getting 2 types of gametes, now you will get 4 types of gametes. Okay, so I'll show you an example of crossing over, how this crossing over and linkage are kind of like different. Okay, so exchange between maternal and paternal chromosomes. Okay, this process is called crossing over. Okay, this process
This process is known as crossing over. Known as crossing over. And what is the effect of crossing over? Genetic recombinations. Effect of crossing over. Effect of crossing over is genetic recombinations. Over is genetic recombinations. Listen. Suppose write this. Let us see crossing over and no crossing over. Suppose একটা জায়গাতে crossing over দেখাচ্ছি, একটা জায়গাতে linkage দেখাচ্ছি. This will be very helpful to you in genetics. Yes. Okay, because this is the basis of it. কোনটা? হ্যাঁ ঠিক আছে যে এই যে maternal আর finally ওটা তো যে ফর্ম হচ্ছে the meat ওর parents এর maternal থেকে ওটা না What am I explaining? Suppose this is maternal chromosome, this is paternal chromosome. Position of centromere is same. Yes. The type of genes on both the things are same. Alleles might be non-identical. If it is a non-identical allele, this is a heterozygous condition. Okay. So suppose here I'm writing, if I actually elaborate this as how do I show the genotype as, it will be this. Okay, so this is suppose a particular person's gametic crossing over going on. And here I'm showing a linkage of another person. Okay, some chromosome is showing linkage, maybe not the same, but some other chromosome. So here I'm showing, here this is the maternal chromosome and the paternal chromosome. Okay, color will be the same because same thing is seen here. Because this is the centromere position. Here capital J, capital K, capital M, capital J, capital small j, okay, small k, small j, small k. Then here small m, here small n, small m, and small n. Now I'm showing another thing, same thing, heterozygous state. Both are in heterozygous state, by the way. Okay, this is also you can write capital J small j, capital K small k, capital M small n, and capital N small. These two show heterozygous nature. Now, when the crossing over, let us assume the crossing over is happening between these two, and the crossing over is happening between C. Here, there is no crossing over. Okay, when they will be segregated, anaphase 1 and anaphase 2, they will, this will form two types of gametes only. Okay, how? Suppose crossing over occurred. Now what we see is I have a maternal chromosome, which has here you have small a, and here you have capital B. Here you have small c and you have capital D. Here it was capital C and capital D because there was no crossing over here. And here the same thing applied. So this chromatid when it is separate, it will go in one gamete. This chromatid when it is separate, it will go into one gamete. But it has a different combination, not the parental. So this is called a genetic recombination. Right? नहीं मैंने सिर्फ C और A का बताया ना, मैंने क्रॉसिंग में C और A का किया है, मैंने बाकी का नहीं किया, बस वो दोनों का, ठीक है. और फिर this was during anaphase 1, इनका जब separation हुआ, that was during anaphase 1. So 23 go here and 23 go here, and there is no differentiation ki all 23 parental will go this, paternal will go this side, and all 23 maternal will go this side. It can be for one chromosome. Suppose chromosome 1, paternal goes one pole, maternal goes another pole. Chromosome 2, maternal may go with the paternal of the chromosome 1.
So it's a very random assortment. This is called random assortment. ना ना ऐसा कुछ नहीं होता, वो randomly assort होता है, इसी को बोलते हैं law of independent assortment. ये जो randomly चल रहा है ना, तो 23 अगर pairs है, 23 pairs का जब gametic assortment होगा ना, उसका तुम probability and combination सोचो. Okay, so it's very huge probability. Okay, so next, if you see here, capital A is here, small b is here, capital C is there, and small d is here. Here, small a, small b, small c, and small d. So this was during anaphase 1, right? Now, anaphase 2 mein, these two chromatids will separate, and these two chromatids will separate. You have 4 gametes like this. Okay. In the 4 gametes, this will have one combination, this will have one chromatid, this will have one chromatid, and this will have one chromatid. See the gametic thing. This is capital A, capital B, capital C, capital D. Came here. This is small a, capital C, small side, small capital B. Small a, capital B, and small c, and capital. Okay. Then here again you have capital A, then you have small b, then capital C and small d, and then here all small. How many types of gametes have been produced? 4 types. Okay. So this is for one individual. Now imagine if this is for the mother, the father also goes the same crossing over because the same chromosome will go undergo crossing over if there is no linkage. If chromosome 1 does not show linkage in the mother, then it will not show linkage in the father also. Okay, that way. So when that father's chromosome will come, it will also produce 4 types. 4 into 4. हाँ बेटा 4 16 आगे ये एक क्रोमोसोम में 16 टाइप से प्रोड्यूस करता है ये एक 16 टाइप से করতে পারবে depending upon how many crossing overs are happening. আচ্ছা মানে আমরা একটা শুধু দেখাচ্ছি তাই না আমি দেখো এখানে ডাবল ক্রস ওভার দেখাচ্ছে। So in a chromosome 50% এর বেশি ক্রসিং ওভার হতে পারে। Single crossover can happen or double crossover at the max, and double crossover is very rare because one crossing over will interfere with another crossing over. Interference volatile. So maximum a chromosomal pair can show 50% crossing over. 75%, 80% hoy, up to 50%. Okay, or so this is 4 types of gametes produced by one individual. This is in anaphase 2, right? Because the chromatid separation is taking place. Now, if you go for this in চারটে কিন্তু ওখানে গ্যামেট ফর্মেশন একটা ইন্ডিভিজুয়াল হচ্ছে না আরে you have 23 from your father 23 from your mother when you will produce gametes you will produce 4 types no for one chromosome going into 4 gametes there will be 4 types of that chromatid thing then the second chromosome will go into the same 4 gametes with a different combination এটাকে তো বলে law of segregation. Law of segregation is representing allelic segregation. Law of assortment is representing allelic pair for a gene. When 2 genes are allelic pair, how they are segregated, randomly assorting in gametes. Both are different things. So, okhane linkage ashe. So, if suppose this is anaphase 1, what will this chromosome from like this, right? Eta ekta korlo, eta ekta korlo. 23 happened. No. Now they have not changed anything. Capital J is as it is, capital K is as it is, capital M as it is, and capital N as it is. J, K, M, N. Here same thing, small j, small k, small m, small n. Here small j, small k, small m, small n. There was no crossing over. This is linkage. Mane, if genes are very closely linked, you will not see crossing over. So there are 2 types of linkage, complete linkage and incomplete linkage. Here I am showing complete linkage. I am not showing incomplete. Just to explain you the idea of crossing over and linkage. This is complete linkage, no crossing over. Okay. So if they produce gametes, what will be the type? Mane, this will produce only one type of gamete. Come in. This will produce only one type of gamete, that is with this, this thing, where you have this combination capital J, capital K, capital M, and capital N. And you will have only one type of gamete here, where you have this particular chromatid present in both the types.
That will be your small j, small k, small m, and small s. So this is the difference between crossing over and linkage. Okay, so in crossing over, when these gametes fuse with the paternal gametes, right? So coming from the father, whatever gamete is fusing. Okay, any of the ovum can have this kind of combination, right? So ovum has this kind of combination, any combination of this 23, and paternal the 22 plus X and 22 plus Y. So the rest of the 22 chromosomes can be of any combination of the alleles. So we don't know. That's why the probability of gamete formation types are very huge, right? And what kind of variability we will get is different. So when they will fuse with some paternal type, suppose a paternal chromosome like this only comes and fuses with this, we get a parental combination, maternal parental combination. Because I said maternal. Suppose a parental type is coming, this type of father's gamete like this only, fusing with mother's gamete like this. It's a different combination, right? So capital A, small a will be there, but capital B, capital B will be there. Different combination. So you're getting a new combination, right? Again, if I take about, suppose let us take the same, this type of father's gamete is coming, and I'm fusing it with this, different combination. Okay. Again, that same type of father's gamete is coming, and I'm fusing with this. What are you getting? You are getting this entire parent, this combination. This one you are getting only of one parental, this thing, maternal. But for this, you are getting both the maternal and paternal combination. Okay, parental types are coming as well as recombinant types are coming. So that is what crossing over is. So how they do it? Physically, how they do it? They use this recombinase enzyme, which has helicase, ligase, and nuclease. Nuclease cuts the DNA fragment. Ligase joins the DNA fragments, and helicase is obviously unwinding because DNA is in the coil state. So first helicase will work, then nuclease will work, and then ligase will work. So that way you get crossing over. This is called genetic segment exclusion. हाँ तो तुम्हारा इसके लिए है ना, इनकम्प्लीट लिंकेज आ रहा है बोल के 1.3% रिकॉम्बिनेशन, फिर वो क्या 98.7% वाज योर ड्रोसोफिला, तोटा तो पर्पल है, तो व्हाइट आई कलर एंड मिनिएचर विंग्स लगता है, येलो बॉडी कलर एंड व्हाइट आई कलर से, व्हाइट आई कलर येलो बॉडी कलर इज मोर लिंक्ड. Okay, white eye color and miniature wings is less linked. That's why 37.2 and all these kind of combination. हाँ, तो ये वाला है तुम लोग को समझना है, यही दिमाग में लाना जब प्रिंसिपल्स पढ़ो. Linkage. meiosis में complete linkage impossible है. मतलब पूरा सारा linkage. हाँ, humans के लिए तो completely impossible है, complete linkage होता नहीं है. कुछ जीन्स लिंक्ड है बोल के हम लोग को अपना पूरा पेरेंटल टाइप दिखता है, माने फीचर्स ऑफ फादर्स फेस के सिमिलर टू होता है ना, कि कुछ लड़कियों में ना दे लुक लाइक देयर फादर्स एंड फॉर सम मेल्स दे लुक लाइक देयर मदर्स मोर. तो ये बिकॉज ऑफ लिंकेज ओनली, लेकिन वो लिंकेज लिंक्ड नहीं है, माने कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट. कंप्लीट लिंकेज ड्रोसोफिला में होता है, वो भी पर्पल आई कलर के लिए. हाँ, एक पर्पल आई कलर और कुछ विंग्स का एक स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए कंप्लीट लिंकेज आता है, वो कभी भी कहीं पे भी क्रॉसिंग ओवर नहीं करेगा. पढ़ते हैं वैसा होता है. ओए वो तो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करो. Someone looks like entirely like the mother, and some traits of theirs look like their father. Entirely कभी नहीं दिखेंगे. Somewhat similar. I also look like my father, but not exactly. I have facial features. I look like my father. Okay. So I don't have entirely, this part is like my dad, this part is like my mother. I don't know what happened there, but so that is the basic thing. Kind of looks. My brother looked like me when he was young. My brother looked like me too when I put a hair. My brother looked like me when he was young. Because when I was young, I had the short hair and the facial features matched with my brother. So that kind of thing. Later on when he grew up, the facial features changed.
तो शेप करने तो तभी आपकी तरह लगते हैं। नहीं ना अभी नहीं लगता, शेप करने से कुछ और ही लगता है, बट इस तरह नहीं लगता। तो हम इसका ब्रेक टेक अप
Acha, the first 2 points to be considered as assertion reason that how are bivalent tetrads visible in packaging. Okay, because further shortening and thickening of the chromosomes takes place. So the arms of the tetrads become very visible. So that is your assertion is bivalent tetrads are visible in packaging stage. Reason would be further shortening and thickening of chromosome circle. Okay, so this is one thing. Yes. So crossing over means that when the genetic exchange are taking place, when they will come together in the offspring. So offspring will show parental combinations also as well as new combinations also. That's the basis of law of independent assortment. Suppose when two pairs of alleles are segregating. So they will segregate independent of each other in the gametes. That's called law of segregation. But when they will come together in the offspring, they show parental and new combinations. That means somewhere during gamete formation, they showed crossing over. Okay. So this is the basis. The two laws are based on this. Okay, two laws of Mendel. Incomplete linkage hole, maybe suppose a J and J only that would have shown crossing over. It's a complete linkage. Incomplete you asked. So incomplete linkage hote hi pare to some extent. Crossing. Coupling, repulsion, all these things will happen. So we recombinant to you. ওই একটা জায়গাতে হবে বাকি সব তো linked. So that is called incomplete linkage. Incomplete means one place you are showing that kind of crossing. Okay. So next, let us go to diplotin. Diplotin. Diplos means two. Diplos means two. Diplotin. What happens here?
Okay. So what has happened in diplotin? What has happened in diplotin is right now chromosome condensation continues. Chromosomes keeps on getting thicker and shorter. Okay, so that is not stopping. So chromosome condensation continues. Chromosome condensation continues. What we see here is synaptonemal complex and recombination nodules dissolve. Okay, synaptonemal complex and recombination nodules dissolve. Recombination nodules dissolve. Okay. What is the third thing? The homologous chromosomes begin to separate, except at certain regions, X-shaped structures, okay, which is called as chiasma. Yeah, sites of crossing over. So we can say the homologous pairs of chromosomes begin to separate. Homologous pairs of chromosomes begin to separate except at the sites of their attachment. Sites of their, we can say crossing over, attachment, whatever you want to write it as, crossing over. Okay. At these sites, X-shaped structures are now clearly visible, which is known as chiasmata. Okay. Okay. At these sites, X-shaped structures, X-shaped structures are visible, okay, known as chiasma or chiasmata, Okay. So what do we see here? First point is synaptonemal complex and this dissolves. Hence we can see chiasmata. So suppose we write this is the assertion. What will be the reason for it? This is the reason. Because synaptonemal complex is getting dissolved and recombination nodule is getting dissolved, we can literally see the X-shaped structures, which was initially not visible because of the presence of recombination nodules. আমাদেরকে mainly focus করতে হবে recombination nodules. Synaptonemal complex, so you can see the bivalent tetrads. Recombination nodules যখন dissolve হবে তখনই chiasma দেখা যাবে। recombination nodule গুলো দেখতে রয়েছে সেটাই কি chiasmata form। এবার ওটা সরে গেলে সেই স্ট্রাকচারটা দেখা যাবে। So basically chiasma formation takes place in pachytene, but the visibility appears in diplotin. Okay, the reason for the visibility is because this thing is dissolving. This is dissolving, this is visible. Synaptonemal complex visibility is for basically the bivalent tetrad. When even if synaptonemal complex is there, you can see the tetrad. But if recombination nodule is there, you cannot see chiasma. So visibility of chiasmata is based on recombination nodule dissolving. A certain reason statement. Okay. So this is your assertion, that will be your reason. Yes, sir. So this is happening, homologous pairs of chromosomes begin to separate. When I'm talking about begin to separate, that means terminalization begins at diplotin. Okay. So here you can write terminalization begins. Just terminalization beginning. This is basically when aste couple is getting separated. There are differences between the couple. ঝগড়া করছে এখন দুটো আলাদা রুমে থাকছে। Same home, two different rooms.
হাত ধরে আছে মানে মানে আস্তে আস্তে ইয়ে হচ্ছে, আস্তে আস্তে ডিফারেন্সেস হ্যাভ বিগন, ছোট ছোট জিনিসে ঝগড়া হচ্ছে। That's how separation begins. আগে ছোট জিনিসে ঝগড়া হবে, তারপর বড় জিনিস নিয়ে আসবে। হ্যাঁ মানে যাই হোক, মানে বড় আমরা উল্টো করছি, আলটিমেটলি রেজাল্ট ইজ ঝগড়া। ओके तो फ्रीक्वेंसी बहुत सारे हैं। हाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रहा है, अब ठीक है। तो normalization in certain primary oocytes, of vertebrates and invertebrates, huh? Certain primary, in primary, short primary oocyte হয় কিনা I have a doubt, but that's why I use the term certain. Only primary oocyte ही होगा, nowhere else. In the certain है, male में नहीं हो, certain होगा, हाँ. Some certain, same thing. Noun है, एक noun है, दूसरा preposition है. No, vertebrates and invertebrates, because you study Lamb-Brush chromosome. Lamb-Brush chromosome invertebrates को लेकर आते हैं, ठीक है? In your module only it is there. That's why I said कि vertebrates and invertebrates, mentioning Lamb-Brush here. This is Lamb-Brush chromosome. Okay, the diplotin stage is prolonged and arrested. Obviously, the oocytes are arrested at this stage for a very long period of time. That is called as dictyotin stage. Okay, so invertebrates. In certain primary oocytes of vertebrates and invertebrates, this stage gets arrested and remains for long time. Fertilization के time पे it happens. Fertilization के time पे नहीं, जब see, when your mother is pregnant with you, you will have primary oocytes in your ovary. Yes. Right? When you are born, the primary oocytes are actually in arrested state, that is in diplotin. The moment you achieve puberty, and then is where the diplotin stage is now revived back, and the oocyte completes diakinesis, meiosis 1 almost, meiosis 1 kore, prophase 2 ta gets arrested. Now that prophase 2 arrested state is called secondary oocyte. When ovulation happens in the 14th or the 15th day, depends, person to person it varies. Yeah. Okay, so when ovulation happens, it is still arrested as secondary oocyte prophase 2. Why? Because centriole is not there. First polar body takes away the centriole. The centriole not there, how will it complete? So it waits for the sperm to fertilize. Sperm has an extra centriole that provides to the egg. And when egg takes the centriole, it completes its meiosis 2 and then fertilization, the fusion of gametes. So then it might adapted promoting Okay, wait করতে হবে, আগে যে কমপ্লিট করবে meiosis 2, then it will fuse. তারপরে ওটাকে fertilize, হ্যাঁ কেন স্পার্মের মাথাটা তো যাবে বেটিলাইন মেমব্রেন কে তো পিয়ার্স করে কিন্তু প্লাজমা সাইটোপ্লাজমে তো ঢুকে যাবে। So head part মানে the nucleus part and some part of the axonal membrane centriole that will be, and that entire axonal part is a spring like thing now. So when the nucleus will squeeze in, the spring will also throw the centriole. Eta reproduction এর পর বিচার করা হবে। Gets arrested and remains for a long time in this state. In this state, it is known as dictyotin stage. It is known as dictyotin stage. It is known as dictyotin stage. So, this is your diplotin. What kind of chromosome they will be forming? Lamb-Brush chromosomes. So, this is an example of Lamb-Brush chromosomes. কেন থাকতে পারে না? আমাদেরও তো আরেস্টেড স্টেটে থাকে।
तो humans मतलब human female में होता है। लैम्ब्डा जैसे का 2x Human फोर्स females में होता है। फीमेल्स में होगा, मेल्स में कभी नहीं होगा, फीमेल्स में होगा। लैम्ब्रश का फंडा है बेसिकली जब वो जाइगोट फॉर्म करेगा एंड ऑल द डेवलपमेंटल प्रोसेस में जितना भी प्रोटीन लगेगा, कुछ भी लगेगा, तो ये वैसे ही बना के रखता है। Those proteins or RNA in chromosome that is required for development of the embryo. So they already make it all up and keep it. Okay. So this is about your diplotin state. So in diplotin we understand dissolution of synaptonymal complex and recombination nodule, visibility of egg-shaped structures called chiasma, then the separation, the beginning of the separation, when terminalization beginning is at diplotin, and also we study about diplotin stage. Okay, so if we talk about in primary oocyte, which is the longest stage, it will be diplotin. But if I talk about sperm cell, which is the longest stage, it will be package. So cell to cell, it will vary. Okay, Shopsoma diplotin is not the longest phase. But people by default धरबो कि packaging because ना mention करले तो we cannot take only primary oocyte consideration, no? ওটা কোয়েশ্চেনটা কিছু হবে ওরকম longest phase of Profess 1 ওটা ডিপেন্ড করছে based on primary oocyte. Can we say macrospore formation you will have diplotin stage na? हाँ, some में तो ना. See, this is a very debatable question. You cannot say diplotin is longest phase everywhere. Because packaging a crossing over होचे. Crossing over takes a time. You are cutting the DNA, uncoiling it, cutting it, exchanging it. So that takes time. It does not happen very fast. So this is based on what they're mentioning. Diplotin ke bole diche because NCERT te likhe diyeche son. NCERT is certain oocytes only, not all. So we have to consider microspore. We have to consider primary spermatocyte. So many things are there. No, oocyte only they are mentioned. There are so many other haploid, diploid cells undergoing meiosis. No, diplotin ki koda. It's very debatable, but technically and logically speaking, that is the right answer. Generally, packaging is longest होता है. Unless some other stages are Exactly. अच्छा, diakinesis मतलब two-way movement. Dia means two, and kinesis means movement. And kinesis means movement. So what happens in diakinesis is, first of all, chromosomes have finally condensed. Chromosomes have finally condensed. Spindle apparatus gets assimilated. Okay. Spindle apparatus gets assimilated. See the transition. हाँ. अब आप इसको एंड ऑफ प्रोफेस भी बोल सकते हो क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस इंटीग्रेट करता है. कंपैक्शन पहले खाते हैं. हाँ, कंपैक्शन तो स्टार्ट हो जाता है, लेप्टोप्टीन में स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होता है वो टेक्निकली. अभी क्रोमोसोम बहुत ही शॉर्ट एंड थिक स्टेज में. तो स्पिंडल apparatus gets assimilated. Okay, then we also see terminalization of the chiasmata has occurred. Okay, the chiasma is now at the terminal end. Okay, chiasma are now at the terminal end. Chiasma are now at the terminal end of the chromosomal pair. Terminal end of the chromosomal pair. But do not separate because that way only it has to come into metaphase 1. ठीक है, तो they will not separate. So chromosomal pairs but do not separate. So what do we see here? Terminalization of chiasmata is seen in diakinesis. So terminalization of chiasmata is seen in diakinesis. It is seen here. Okay.
Next, we can also write centrioles move to opposite poles because spindle apparatus gets affiliated. That means centriole is already moved to opposite poles. What is the next thing? Nuclear membrane and nucleolus disintegrate and disappear. Okay. Nuclear membrane and nucleolus disintegrate and disappear. Can we still see tetrad here? अच्छा अभी सेपरेट अभी सेपरेट नहीं हुआ है, बाइवैलेंस ही है. तो यस काइजमाटस टर्मिनलाइज काइजमा टर्मिनलाइज होने के बाद भी वो लोग अभी भी जुड़े ही हुए हैं ना. ऐसे ही तो है, दोनों का ऐसा करके है. माइटोसिस होने के तो हाँ, माइटोसिस बस तो दिस इज द थिंग. হ্যাঁ মানে সব গেছে, গেটে ঘ হয়ে গেছে. I am already worried for the next exam. Which is on cell cycle and cell division. But Ma'am, it's okay, we'll work hard for this. please do. वो है bio classification. I give up. ना bio classification बाबा focus only on NCERT. Don't go for extra example. photosynthesis আর respiration আমি বলছি আর molecular basis আর principles একসাথে দিতে হবে. হ্যাঁ रेस्पिरेशन देखो सबसे इजी टॉपिक ही रेस्पिरेशन है. इन द प्लांट फिजियोलॉजी सबसे इजी टॉपिक रेस्पिरेशन है, उससे इजी है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ है ही नहीं उसमें. ओके सबसे डिफिकल्ट है फोटोसिंथेसिस. क्या समझ पहले तो समझना है ETS. कोई दिमाग खाएगा 2 घंटे मैंने 2 दिन तक. BTS आसान है. Everybody thinks they're a gangster and is a real gangster. Okay. Chalo, finally, we've got our chromosomes like this. Okay, ये तो अपना aster formation, whatever that is giving. Aster formation and all is happening here. And we've got another chromosome here. This is like terminalization point. Like our পাচ্ছে না এবার separation হবে. So this yeah. তাহলে হয়ে গেছে না. আরে আঙুল ধরে আছে. ঠিক আছে. So till here we know 2n is equals to 23 pairs. Okay, because it is still in the paired condition, maybe very separated out, but still. Okay, then 92 chromatids. Okay, and DNA is equals to 4C or equivalent to 92 molecules. Okay, but the alignment of the chromosomes now will be in double metaphasic plate concept. Mane 23 centromere in one line, 23 centromere in another line, facing each pole. Okay, so this will be polar positioning. So this is your diplotin. Nuclear envelope is disintegrating. Nucleolus has already gone. Okay, so this is there, and spindle apparatus is assimilating. So you do see aster formation. So we generally see aster formation here, where centrioles move to the opposite poles. So this is called as your late prophase. Okay, pachytene, leptotene, zygotene is early prophase. Pachytene, diplotene is mid prophase, and diaphanesis is late prophase. So actually, if you divide prophase into 3 subphases more, this is the way it is. In mitosis, they have not shown mid prophase. So mid prophase is basically where this chromosomal condensation continues.
nuclear membrane is disintegrating. It begins start disintegrating in early only, but when it is increasing in size in early, mid prophase it begins to disintegrate, and centrioles start moving to opposite poles from early prophase. तो उसको ना यहाँ पे एनसीईआरटी में सिर्फ 2 टाइप फेजेस में किया है, लेट एंड अर्ली, लेकिन होता है 3 टाइप का प्रोफेज. ओके, अच्छा, नेक्स्ट डन. लेट्स गो टू मेटाफेज 1. मैम लास्ट clear? Okay. Metaphase 1 I'm showing on one side and anaphase 1 I'm showing on the other. Difference na mane oye normal way te dakachi how it happens. Okay, so this is your equatorial plate. Okay, this is your equatorial plate, and these two and these two. This is your metaphasic plate. Yeah, metaphase plate 1. Yes, and this is your metaphase plate 2. Okay, this is obviously centrioles, and see how the spindle fibers are attached. The spindle fiber, suppose this is pole 1 and this is pole 2. So pole 1 and this is pole 2, right? Spindle fibers from pole 2 is attached only to this side of the chromosome. It is not attached to the other side also. Spindle fiber from this side is attached to only this side of the centromere. Okay, so that is how we know that now segregation of the homologous pairs is going to happen. Okay, otherwise in mitosis what used to happen? Centromeres from spindle fibers in both the poles are coming and attaching to the centromere of one chromosome itself. But here the chromosomes are different. Okay, now we can also say this can be maternal, this can be paternal, this is paternal, this is maternal. So there is no hard and fast rule ki all paternal will go on one side and all maternal will go on one side. It can be a mix and match. So like this 23 chromosomal pairs can be mix and match. Okay, that way the gamete will form. So this is about metaphase. Now coming to anaphase, if you see. So नहीं, सेंट्रोमियर क्यों स्प्लिट होगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट हो गया तो फिर तो इक्वेशनल हो जाएगा. वो जो टर्मिनल के बाद वो सब टूट रहा है, मतलब क्या पेज में कहाँ पे? हाँ मैडम, तो बाइबल में सेपरेट हो रहा है. हाँ,
तो डिसजंक्शन होता है, डिसजंक्शन ऑफ होमोलॉगस पेयर्स एनाफेज में। एनसीईआरटी में जो पिक्चर है उसमें तो मेटाफेज में दिखा है। क्या दिखा रहे मेटाफेज में? হ্যাঁ মেটাফেজে আলাদা আলাদা, ওটা মেটাফেজ আলাদা আলাদা মনে হচ্ছে, ওটা তো মেটাফেজ প্লেট। ওখানে তো তুই ট্রান্সলেট দেখি হ্যাঁ দুটো বিট আমি দেখতে पूरा रहता है थोड़ा सा वो वो तो एनाफेज 1 में सेपरेट होना शुरू होगा। ये लोग ये गलत फर्स्ट ऑफ ऑल पिक्चर है, मैंने whoever बाल पिक्चर दिए भाई प्लीज। ও সরি এখানে এটা কি কথা বলে ঠিক আছে চলো, এটা হচ্ছে তোমার ইকুয়েটোরিয়াল প্লেট। সো উই গট দিস ইজ পোল 1, দিস ইজ পোল 1 and this is pole 2. এখানে কটা ক্রোমোসোম? 23 chromosomes here. 23 chromosomes. How many chromatids? 46 chromatids. Okay. And how many DNA molecules? 46 DNA molecules. So these chromatids are in dyad condition. Number of DNA molecule is double. Hence we call it as dyad of cells when we go to telophase 1 or cytokinesis 1. Then the daughter cell is called as a dyad cell because the number of chromatids are 2 per chromosome as well as DNA is also content is double. Okay. So similarly here also you've got 23 chromosomes. 23 chromosomes, not pairs. Okay. Then you've got 46 chromatids. And you have 46 DNA molecules, or we say 2C content. Here also 2C content. So per pole, this is the answer. Total cell mein now you have 46 chromosome, 92 chromatids and 4C DNA per cell. But per pole, it is different. per pole N2C or total হচ্ছে 2N, 4C and 4N. 4 and 4C. না 4 and 4C না 2N ই হবে because 23 and 23 হচ্ছে না, pair separation হচ্ছে, chromatid না। If it is pair separation it will be 2N only. If it is chromatid separation then you say 4N, that kind of thing. Okay. হ্যাঁ dyad হচ্ছে না, 46 chromatids dyad chromosome আছে তো। Per chromosome 2 molecules of DNA, 2 chromatids. So dyad. Okay, so coming to the next one, see, so metaphase what happens? Spindle fibers attached to spindle fibers of one pole, spindle fibers of each pole attach to the centromere, or it is a kinetochore, not centromere, attach the kinetochore, kinetochore of one of the chromosomes of homologous pair facing that pole. Chromosomes of homologous pair facing that pole. Homologous pair facing that pole. Okay, so that is what is seen here. This spindle fiber is attaching to this spindle fiber is attaching to this. This is not extending to here, and that is not extending here. So this is how separation will begin. So first, attachment of spindle fiber is very important. Second is obviously spindle fibers contract from the poles and pull the separate the homologous chromosomes. So disjunction of homologous pair of chromosomes occurs. Okay. Second is first of all, second is centromeres of homologous pairs. Centromeres of homologous pairs align in 2 rows. Homologous pairs align in 2 rows. At the
equatorial place. So at the equator, 2 rows at the equator. Okay, at the equator, forming double metaphasic plate. Yes, forming double metaphasic plate. This is different from mitotic metaphasic plate. Double metaphasic plate. What are the two differences that we can understand of mitosis metaphase and meiotic metaphase? Metaphase one, meiosis one of metaphase one of mitosis. Generate corona, very good. Another 3 points that we have to understand. First of all, is the alignment, that is double metaphasic plate. Second is spindle fiber attachment. It's not happening for all the chromosomes from both the poles. So whatever is facing that chromosome, that is going to get attached. Third is as a pair they are coming. Okay, the chromosomes are aligned as a pair. But in case of metaphase, the chromosome are aligned singly. All 46 together in equatorial plate. So basically morphology can be studied more better in mitotic metaphase. Meiotic metaphase and morphology is too difficult. Even if they're in a condensed state, because next when they'll separate out, they will separate out like that. So shape also you cannot study. Generally, we consider mitosis for this reason, to study the morphology. Okay, so centromeres of homologous pair align in 2 rows at the equator, forming double metaphasic plate. Okay, so this is all about your mitosis. Next, we'll go, metaphase 1. Intrazonal fibers দেখো ওটা প্লান্ট সেলে বেসিক্যালি হয়, ওটা ফর্ম করতেই পারে, হ্যাঁ করতেই পারে। I'm talking about metaphase 1 and 1. What he's saying, interchromosomal fibers. মানে from both the sides the fibers going and attaching to the chromosome. হ্যাঁ, zonal fibers এর কথা বলতে, chromosomal fibers এর কথা বলছে। The continuous, the discontinuous and the chromosomal fibers. Chromosomal fibers, the fibers attaching to the chromosome. Nah, okay. Acha, next, what happens here? Spindle fibers contract. Spindle fibers of each pole contracts. Okay, or you can say reduces in the length, which causes a pulling tension. Okay, contracts or reduces in length. Reduces in length, pulling the centromeres they're attached to, centromere of chromosomes they're attached to, chromosomes they're attached to. Okay, what does this lead to? This leads to disjunction of the homologous pairs. This leads to disjunction of homologous pairs, homologous chromosome pairs. হ্যাঁ, homologous কে তো separate করবে, আলাদা করবে। হ্যাঁ, exactly. Bivalents are getting separated, so paternal maternal will separate out. Huh? Sister chromatids is the same chromosome, no? The homologous chromosomal pairs get separated. So basically, you can say non-sister chromatids get separated. Homologous chromosomes separate. Okay, that is non-sister chromatids. That is non-sister chromatids separation. Acha, if there is some issue here, this is called the actual reduction division. The chromosome number becomes half now. There's a reduction in the chromosome number to half. Actual reduction division is anaphase 1. Suppose by any chance, ekhane problem hoye jay. One of the chromosomal pair is not showing separation. Then you get aneuploidy. You get polyploidy if it is in mitosis. You get aneuploidy
when it is in anaphase. Yes, meiosis. Okay. So this is also a reason for aneuploidy. So another point here. Come in. যে ধরুন যে গ্যামেটটা অ্যানিউপ্লয়েড শো করছে তার যে করেসপন্ডিং গ্যামেটটা সেটা তো ইউপ্লয়েড শো করবে। হ্যাঁ, euploidy মানে যে chromosome number is same. Suppose you said 22 plus X and 22 plus 0. তাহলে you will get Turner syndrome. Right? And exactly. If now suppose one gamete has 22 plus XY. XY did not get separated. And another gamete has 22 plus X. Klinefelter syndrome. 22 plus X plus 22 plus 0 তাহলে কি হবে? কোনটা? 22 plus XY, right? সেটা সেপারেট করলো না কিন্তু মেটা সেপারেট। আরে XY হলেও তো 22 plus 0 হলেও তো কিছু যায় আসে না। হ্যাঁ, যায় আসে কোথায়? You are getting 44 autosomes in XY. Possible, highly. কিসের সমস্যা হবে? XY তো আছে। হ্যাঁ, একটা না থাকলে তখন প্রবলেম। See, 22 plus Y and 22 plus 0 will never form a zygote. It will never be viable. Yeah, because X is needed. Yeah, exactly. 22 plus Y and 22 plus 0 will not give rise to a zygote. That is there. XXY हो सकता है in both the cases. See, the zygote formation depends on mother-father both. Aneuploidy happens in the mother or the father. Here, look. Okay, so this leads to the chromosome number is reduced to half. Chromosome number is reduced to half. Okay. Each chromosome that is moving to the poles is in a dyad condition. Each chromosome moving towards poles is in dyad condition. Each chromosome moving towards poles is in dyad condition. Is in dyad condition. Yes. So we are anaphase 1 and metaphase 1 is complete. Now we have telophase 1. Telophase 1 will have the same points that you wrote for telophase. So chromosomes move to opposite poles. Nuclear membrane and nucleolus slightly, obviously form, but chromosomes do not completely decondense, or they do not completely elongate into fibers. They are present in a partially condensed state because they obviously after telophase 1 again they have to enter prophase 2. So if complete condensation happens, then again prophase 2 they have to complete decondensation happens. Again prophase A they have to show complete condensation. So to stop that from happening and making meiosis to a faster process, chromosomes remain in a partially condensed state. Okay. হ্যাঁ, এবার এখানে কি আছে? Telophase 1 can be followed by cytokinesis, may not be followed by cytokinesis. But telophase 2 has to be followed by cytokinesis to form 4 gametes, right? 4 cells, 4 non-identical daughter cells. Each of the daughter cells have half the number of chromosomes, but the combination of genes will be different. And then I'm crossing over it. If 4 gametes are formed, the combination will be different. Okay. If one cell has 2 nuclei, now that particular meiosis 2 will be perpendicular to meiosis 1. The process of meiosis 2 will occur perpendicular this thing. Meiosis 1 এরকম ছিল, meiosis 2 এই হবে perpendicular. That is how it is if there is no cytokinesis. দুটো একবার হলো দুটো ডিভাইড সেল করলো, তারপর একবার হলো তো দুটো হলো। But if first after telophase 1 cytokinesis occurs, then 3টে cytokinesis overall হবে।
Number of cells, if it is 4, number of cytokines would be n minus 1. ठीक है? Number of cells are 64. Total number of meiotic divisions, n minus 1. So if the number of cells are 4, number of cytokinesis has happened n minus 2. Because if first cell divides into 2, that is cytokinesis 1 cytokinesis, then 2 daughter cells are there. Each daughter cell will undergo cytokinesis once. Then how many? 1, 2, 3. Total 3 cytokinesis. अरे cleavage तो होते ही पड़े. So first cleavage is perpendicular to the next. Oh hi. Okay. Chalo next. Coming to telophase 1. Telophase 1 daughter nuclei are formed. Each cell has its own centriole. Obviously, each pole has its own centriole. Okay, and daughter, this is nuclear membrane is formed like this. Okay, nuclear membrane is formed. Chromosomes do not lose their complete individuality, so they kind of look like this, partially condensed like this. हाँ. अरे ओके जी तो तोड़े रहते ये गन तब ये तोड़ा ही भूल करছিস. So here what you have n is equals to 23. Here also you have n is equals to 23, and then you have obviously dyad condition of chromosomes. Here you have dyad condition of chromosomes, and here DNA here is basically 2C. Here also DNA is 2C. Dyad condition means 46 chromatids. N is equal to 23 means number of chromatids will be 46. Double it. Okay. So in telophase 1, what happens? Chromosomes move to opposite poles. Chromosomes move to opposite poles. Opposite poles. Okay. They do not completely decondense. Okay. They do not completely decondense. Completely decondense. Okay, if this is asked as an assertion, then you can write reason is because again the cell has to enter prophase 2. So partial condensation is okay. Okay, nuclear membrane and nucleolus are formed. Nuclear membrane and nucleolus reform. Membrane and nucleolus reform. Nucleolus reform. Okay. Each nuclei has dyad condition of chromosomes and 2C amount of DNA. Each nuclei or each daughter nuclei has haploid condition, haploid chromosome number, dyad condition of chromosomes, and double the amount of DNA, and or it is a 2C amount of DNA. And 2C amount of DNA. So this is your telophase 1. Telophase 1 is often followed by cytokinesis 1. So you can call this as dyad of cells. Even cytokinesis 1 can be considered as dyad of cells. Okay, because daughter cell will have dyad condition. Okay, so this much is telophase 1. Next what will happen? After telophase 1, cytokinesis may be followed, may not be followed, but there will be one process that will happen, interkinesis. So in interkinesis, there is no DNA replication, synthesis of RNA and proteins, tubulin proteins and all, as well as centriole duplication.
So these things happen. Interkinesis is a very short-lived process and immediately followed by prophase 2. Now, if it is secondary oocyte, then it is arrested at prophase 2. Clear? Ever arrested for 24 to 48 hours. মানে ovulation যখন হচ্ছে, so তোমার follicular phase will happen, continue with your this development of you have follicular phase begins from menstrual phase only, and it continues till your follicular proliferative phase when the uterus is developing. The 14th day or 15th day, ovulation will happen. So by the time your proliferative phase is over, it's in a secondary oocyte stage. Then for 24 to 48 hours, the secondary oocyte will be viable in prophase 2. মানে 2 দিন। ঠিক আছে? Degenerate করে যাবে। In the fallopian tubule, it will degenerate. Because fertilization has not happened. Corpus luteum starts disintegrating. So that is the basis of it. Okay. So coming to telophase 1. Telophase 1 may or may not be followed by cytokinesis. Followed by cytokinesis 1. Cytokinesis 1. Okay. Post telophase 1. Post telophase 1. Cell enters post telophase 1, the cell enters into a short phase called interkinesis. Phase known as interkinesis. Okay. So what happens in interkinesis? Yes, interkinesis. Okay. No DNA replication. No DNA replication. Only centriole duplication. Centriole duplication. Synthesis of RNA and proteins required for the second phase. Okay, synthesis of RNA and proteins required for second phase. Second meiotic phase. Okay, second meiosis is only mitosis. But the only difference between second meiosis and mitosis is that after mitosis, daughter cell will have 2n number of the condition of the chromosome, as well as monad condition of the chromatic is there, and 2c amount of DNA. But after meiosis to equational division, the chromosomes, daughter chromosomes or daughter cells will have your n condition of the chromosome number and 1c amount of DNA. But the number of chromatids remain the same. Only the DNA content reduces further, and also the chromosome number remains the same. So equational because chromosome number is always the same there. Parental daughter cell and the further daughter cells, the number is the same. But the DNA content has reduced from the parental daughter cell, 2c to 1c. মানে 4c to 2c, 2c to 1c. এটা graph কিরকম যাবে? If you calculate the graph of it, it will be like this, then it goes like this, then it goes like this, আবার এরকম যাবে, then this. That will be the graph. Okay. মানে 2n to c 2n to c ভাই তুই 2n to c এসব করিস না দাঁড়া বলছি। Okay, so let's go to meiosis. Chromatin fiber completely unwinds. Decondense করছে না because immediately it has to enter prophase 2. Okay, so you can write that. There is no complete decondensation of the chromosome into chromatin does not occur. Okay, during telophase 1.
Reason is because immediately after telophase 1, the cell has to enter the meiotic 2 phase. So if you do complete decondensation, again complete condensation, it will take a time. It will take a lot of time. And meiosis 2 is very short phase. Okay. So that is there. Acha, coming to oda Richi pore, meiosis 2. कौन सा? Although in many cases the two undergoes उसी का तो समझ में बोली कि कंडेंस कंप्लीटली नहीं होता. हाँ, उसी का मीनिंग ये है कि although in many cases the chromosomes do undergo some dispersion, they do not reach the extremely extended state. मतलब chromatin के state. Some dispersion मतलब partial decondensation. ना, elongated means slightly elongated. Completely thread-like হচ্ছে না. ওখানে হচ্ছে ওটাই বলছে completely extended state means thread-like. So that is not happening. Slightly extended মানে some amount of water molecules they are actually gaining, but not completely to make it thread-like. So that is kind of explaining partial decondensation. Okay. So meiosis 2 similar to mitosis. Similar to mitosis. Okay. Also has 4 subphases, 4 substages. Okay. So first we have prophase 1. Sorry, prophase 2. এটা কি without cytokinesis বোঝাবো না with cytokinesis? With cytokinesis দিয়েছে, হ্যাঁ জানি আমি. So without cytokinesis, with cytokinesis I teach. Okay, without মানে you just have to do perpendicular direction. Okay. So suppose this is the cell and this is a single daughter cell. Okay, and there's like a nuclear envelope present. And the chromatin reticulum, which are in a partially condensed state, are actually now going to in complete condensation state. So we are seeing this kind of a prophase 2 is very short-lived, so centrioles have two opposite poles, giving out asters. So what happens in prophase 2? The partially decondensed chromosomes now get completely condensed. Okay, partially decondensed chromosomes, condensed chromosomes get completely condensed. Come in. Get completely condensed, and now they obviously get their individuality back as discrete units. Okay, so it was not initially present, slightly present, not completely. Then what happens is that the nuclear membrane and the nucleolus disintegrates. Okay, nuclear membrane and nucleolus disintegrate. Nucleolus disintegrate. Okay, disintegrate and disappear. We can write disappear also. Centrioles move to opposite poles. Centrioles move to opposite poles. Opposite poles and give out asters. Give out asters, write down basically in animal cell. Eta likhe ne baba ei prophase 2 ta. Right. So finally what happens? Spindle fibers start getting assimilated. Okay. Spindle fibers are assimilated.
Tomorrow I think we have class, so we'll come with this. This is with cytokinesis. Without होता तो same चीज हम दो साइड में करते हैं ऐसे. Without मतलब ऐसा हो जाता है. हाँ, एक ही जगह पे. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन ऐसा हो रहा है. और यहाँ पे एक सेंट्रियोल है, इधर एक सेंट्रियोल है, राइट. और जो ये है, ये ऐसा करके अलाइनमेंट कर रहा है. तो isn't this perpendicular to the meiosis 1? की? ना तोड़कांड नहीं. This is not there in NCERT. Why will you allow them study? I am just telling you कि if there is no cytokinesis happening, the plane of division is perpendicular to the first one. That is it. हैं? तो meiosis 2 भी तो हो जाती है. हाँ, माइटोसिस में पढ़ा है, बस लिखे नहीं भी कि the number amount of DNA and the मैंने will reduce 4C to 2C, 2C to 1C. Just read it. ठीक है, तो कुछ ना है, इधर बेसी टाइम
जब तक आगे स्पेस हाउसफुल है अभी स्पेस होने के बाद भी लास्ट में बैठेंगे हम बाहर चलेंगे और टेंट में बैठेंगे क्लास दो और जब भी प्लेस है आपके पास कोई साइड में यू हैव स्पेस वन साइड में यू हैव स्पेस ऑप्टिक मतलब है अगले क्लास से मेरे क्लास में मैंने कोई देखा बहुत अच्छा है बहुत अच्छा हाँ चेक नहीं करो ऐसे होता है चट्टे कौन हो गया मतलब तो क्लास के बाद हम क्लास में डाउट लेंगे तो पढ़ेंगे Heading मुझे प्लीज पॉली का क्या चेंज तो स्टार्ट नाउ लास्ट क्लास देखा था हमने करेक्ट नाउ तो जैसे इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड was polysaccharide ऐसे इन केस ऑफ प्रोटीन the monomer is amino acid the polymer is protein or polypeptide chain so क्या basically polypeptide chain is a chain of polymer of amino acids yes
Like this, we have a chain of amino acids linked by peptide bonds. You see यहाँ पर क्या था, direction of synthesis क्या था हमारे पास? C2. पहले तो ये देख लो, when we create a polymer of amino acids, क्योंकि the bond is formed between carboxyl group of the first amino acid with the amino group of coming amino acid. So first amino acid का carboxyl group incoming amino acid के amino group से react करता है. That is why first amino acid का जो amino group है उसे कोई react करने वाला नहीं, because first का carboxyl group reacts with amino group of incoming nucleotide. It is the first amino acid to be added in the chain. तो इसका amino group मुझे क्या मिलेगा? Parallelly, क्योंकि incoming nucleotide का amino group add होता है, तो जो last हमारा amino acid है to be added, उसका carboxyl group क्या मिलेगा हमें? So at one end of the chain we have three amino groups, that is the left side. So on the left hand side or left end we have three amino groups. So this left hand is called as क्या बोलते हैं इसको? Amino terminal or short में, and similar to this, on the right hand side we have three pivots, carboxyl groups, and that right hand where we have three carboxyl groups, इसे क्या नाम देंगे? Carboxy terminal या फिर short में carboxy और C terminal. PNCRT का प्रॉब्लम क्या है? जरूर याद रखेंगे कि लेफ्ट साइड पर कौन सा टर्मिनल है, राइट साइड पे कौन सा टर्मिनल है. And one more point, what is the direction of synthesis? Chain को हमने कौन से direction में synthesize किया? N2C और C2N? N2C. So the direction of synthesis becomes N2C. That is what? ये हमारा हुआ direction of synthesis. It is N2C. क्योंकि direction of synthesis is N2C, तो आपको direction of synthesis, तो आपको first amino acid जिसको हमने ऐड किया इस चेन में कौन साइड पे मिलेगा? Left. So left hand side पर we have the first amino acid to be added, and parallelly right hand पर जो मिलता है हमें amino acid, वो क्या होगा? Last to be added. ये important है. तो जब भी बुक्स में राइट एंड लेफ्ट बोलेगा अपने रिस्पेक्ट में राइट एंड लेफ्ट क्या चेंज कर देंगे तो जगह पे तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर भी हो, या फिर देखेंगे अगर आप पॉलीसेकेराइड में भी उधर भी लेफ्ट टू राइट हमारी रेफरेंस में, बिकॉज़ रेफरेंस चेंज करोगे तो डायरेक्शन बदल जाएगा. तो जो ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्व कर रहा है, जैसे मान लो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपके सामने चेंज रहेगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा मेरे सामने चेंज रहेगा. तो ऑब्जर्वर के एंगल पे लेते हैं लेफ्ट, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका लेफ्ट, उसका राइट. तो जो भी ऑब्जर्वर है उसके सामने चेंज सामने मिलेगा, आपका लेफ्ट आपका. So on the left hand side जो हमारे पास amino acid है, it is the first amino acid to be added, and right side पर जो हमारे पास amino acid है, that is last to be added. ये है हमारे पास first amino acid, this is last to be. सबने पूरा कर लिया फिर बहुत अच्छी बात है. Now यहाँ पर अमीनो एसिड वाला पोर्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है. We are going to start now proteins.
After that proteins का section है. चलो. Total proteins. Polypeptide chain of 50 amino acids or more than आप में से किसी के पास अभी chemistry का NCERT है? Next से बात करते हैं. Check कर देखिए. फोन में check करो protein का definition करेंगे. क्योंकि 50 अमीनो एसिड से बड़ा ये सब रेफरेंस NCERT में नहीं है 500. उधर होगा कि लिखे हुए लगते हैं. Sir, they are macro molecule लिखा है. पढ़ के बताओ क्या? हाँ? पढ़ के बता क्या लिखा है? अरे आपके पास किसी के पास फोन में या फिर बुक है तो पढ़ के बताओ डेफिनेशन क्या है प्रोटीन का. जब तक आप लिखिए इधर. जैसे पॉलीसेकेराइड्स वेर पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड्स, न्यूक्लिक एसिड है पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ऐसे ही प्रोटीन्स है पॉलीमर ऑफ, क्योंकि हमारे पास 20 अमीनो एसिड्स है जो प्रोटीन बनाते हैं. कभी भी देखा था हमने इन केस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स वी हैड टू वेरिएंट्स, होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड. कार्बोहाइड्रेट में ऐसा था हमारे पास we could have such a polysaccharide जिसमें कि एक ही वैरायटी के अमीनो एसिड पकड़ एक ही वैरायटी के मोनोसेकेराइड हो. बट प्रोटीन कभी भी एक ही वैरायटी के अमीनो एसिड से नहीं बनता. तो प्रोटीन्स आर ऑलवेज most abundant protein in animals collagen is collagen. Yeah. They operate in every part of the body form fundamental structure. Like they are also required for growth and maintaining the body. If you like to see what you do, you might be. प्रोटीन का डिवीजन लिखा कितने चेन का बना है सर सर वो सब वो have already Insulin के वाले. Amino acid is a residue having molecular mass higher than 10,000 kilo is called a protein. मोर देन 10 को बोला है पॉलीपेप्टाइड, 100 से को बोला है प्रोटीन, राइट. The most abundant proteins in animals is collagen, and in plants as well as sphere. इस क्या है? हो गया. अब ये अपनी तरफ से मिक्स करके देते हैं. Proteins are basically consist of multiple polypeptide chains or single polypeptide chain having question sensitive started.
आकाश के मैट पे लिखा है मोटन। थोड़ा ज्यादा दिया है। आकाश के मैट पे लिखा है मोटन, ये लिखा है मोटन 100, राइट? ये देखा आपने, कितना तो अच्छा मोटन 100 ना, more than 100. क्या करेंगे? Plus 12. तो वो टिश्यूज था ना, तो टिश्यूज में थोड़ा आउट ऑफ है। इसलिए नहीं। तो प्रोटीन किसको बोलेंगे? या तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें कि मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन हो, या फिर एक बहुत एक सिंपल सा फंडा है हमारा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को प्रोटीन बोलते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स किस एस्पेक्ट में? तो दो बातें हो सकती है, या तो मल्टीपल चेन हो सकते हैं, या फिर एक ही चेन होगा बट बहुत बड़ा चेन। बड़ा कितना? कम से कम आपके इंसिडेंट लिखा है 100 के आसपास। आकाश के आचरण वही लिखा है मोदी पे लिखा है, और आकाश के पैके लिखा है 50, फिर 50 से कम करेंगे। तो इधर we have multiple chains, बोलेंगे प्रोटीन, और एक ही चेन हो कुछ बहुत बड़ा हो, more than 50 to 100, तब बोलेंगे उसे। So logic is complex structure is called as protein. छोटे चेन को प्रोटीन नहीं कहते। जैसे एग्जांपल के लिए रखते हैं इंसुलिन, इंसुलिन के पास टोटल 51 अमीनो एसिड्स, लेकिन वो दो चेन में ए एंड बी, एक के पास 30, एक के पास 21, ए के पास 21, बी के पास 30 अमीनो एसिड्स हमारे पास होते हैं। तो अगर हमने ए चेन को अकेला लिया होता या बी चेन को अकेला लिया होता तो उसे प्रोटीन नहीं कह सकते, छोटा चेन। बट एक से ज्यादा छोटा चेन हमने साथ में लिया तो कहलाएगा प्रोटीन। या तो एक से ज्यादा चेन हो या फिर सिंगल बट बहुत बड़ा चेन, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को we treat as protein. Now let's see protein के structures start करते हैं। सिंगल बड़ा चेन होगा तो मोनोमर भी तो हो सकता है। मोनोमर का बच्चा जब एक ही टाइप का अमीनो एसिड को पूरे चेन। Protein structures. So on the basis of complexity कह सकते हो या फिर order of formation कह सकते हो, we have 4 varieties of protein structures. Complexity के बेसिस पर या फिर order of formation के बेसिस पर हम 4 वैरायटी के प्रोटीन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? Primary structure. Name itself says primary. यह first structure to be formed in any protein. इसलिए प्रोटीन में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो बनता है वो है प्राइमरी स्ट्रक्चर, और इसलिए सबसे सिंपल, इससे और सिंपल प्रोटीन का स्ट्रक्चर ना हो। इट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर, और प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा? इट इज लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, ये पहला स्ट्रक्चर टू बी फॉर्म। आपने अमीनो एसिड्स को जोड़ दिया आपस में और एक स्ट्रिंग बन गया, एक चेन बन गया अमीनो एसिड का। दैट स्ट्रिंग और चेन initially formed during synthesis of any protein is called as primary. Primary मतलब first structure to be formed. जैसे किसी भी घर को बनाओ, पहला काम जो होता है हम लेते हैं मोनोमर दैट इज ब्रिक, और ब्रिक को ऐड करके किसी भी घर को बनाएंगे, एक सिंगल रूम का घर हो, एक फ्लोर का घर हो या मल्टीपल फ्लोर का बंगलो हो, कुछ भी बनाइए आप। सो इनिशियली पहला काम क्या होता है? ब्रिक्स को जोड़कर हमें वॉल होता है, फिर फर्दर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो, जो पहला स्ट्रक्चर हम बनेगा, we will have a chain of amino acid, that is string of amino acid, that is primary structure. किसी के पास आइडिया तो सोच के बताएंगे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर कब बनता है, कौन बनाता है? इसके यंत्र बनाएगा राइबोसोम, बनेगा ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। आपने सीखा है टीआरएनए आप एक एक देते रहते हैं अमीनो एसिड, राइबोसोम एक एक करके जोड़ता रहता है अमीनो एसिड। तो जो पहला स्ट्रक्चर बना ड्यूरिंग ट्रांसलेशन बिफोर फोल्डिंग इनसाइड द ईआर, आपने देखा है प्रोटीन बनने के बाद होता है पीटीएम, पोस्ट ट्रांसलेशनल मल्टीप्लिकेशन इनसाइड द आरईआर।
तो RER के अंदर फोल्डिंग वगैरह ग्लाइकोसाइलेशन वगैरह होने के पहले जो सबसे पहला स्ट्रक्चर बनाया राइबोसोम ने अमीनो एसिड को जोड़ जोड़ के, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है। आपको समझ में? सेकेंडरी टर्शियरी बनने के लिए चेन को फोल्ड करना पड़ेगा, चेन को फोल्ड करने के बाद चेन को बनाना पड़ेगा। सही है? is the linear chain of amino acid and therefore कह सकते हैं it is the first structure to be formed। ये हमारा मान लो लिख देते हैं, ये अमीनो एसिड है like this। हम ढेर सारे अमीनो एसिड को मिलके together and we create a chain। How? That's the total chain work. We got this primary structure. So primary structure is very simple. It is like a simple polypeptide chain. एक सिंपल सा पॉलीपेप्टाइड चेन जैसी आपने बनाया और अगर उसमें ज्यादा अमीनो एसिड है मान लो तो बन गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ इनिशियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सो बीइंग अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन, इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के सारे फीचर होंगे। मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट साइड पर मिलेगा हमें क्या बताओ, एंड राइट साइड पर, and that is why being a polypeptide chain, this structure gives us what? It gives very important line and said ये primary structure में क्या बताता है? ये बताता है position information of amino acid, means बताता है कि at which position which amino acid is present। position wise बताता है, जहाँ रहेंगे सो ये। So this is the first, this is the second, this is the third one। It gives you positional information of amino acid। प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन से प्रोटीन में मिलेगा? सारे ही प्रोटीन, कोई भी प्रोटीन उसके फॉर्मेशन के प्रोसेस में प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बनना ही बनना है। जैसे हम पूछेंगे कौन से घर में दीवार मिलेगा, सारी किसी भी घर को बनाएंगे तो वॉल तो बनेगा ही बनेगा। अब सेम एक सिंगल रूम का घर बनाओ, एक घंटे का बनाओ, बंगले बनाओ, कुछ भी बनाओ, वॉल तो बनना ही बनना है। बट अगर आपसे मैं पूछूं जैसे एग्जाम्पल, अभी आपको कॉपी करने की जरूरत है। मान लो हमने लिया ब्रिक, ब्रिक है हमारा मोनोमर। इस ब्रिक को ऐड करने में क्या मिलेगा हमें? पॉलीमर, दैट इज व्हाट? ये हमने बनाया बोर्ड। ये है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। किसी भी घर को बनाएंगे तो ये तो बनेगा ही बनेगा, राइट? अच्छा, ये हमारा मोनोमर, ये हमारा पॉलीमर। वेरी इजी, सिंपल सा एक वॉल हमने बनाया। अब अगर हमें एक रूम का घर चाहिए तो क्या करेंगे? अच्छा, किसी भी वॉल को बना हुआ, अगर हमें एक सिंपल सा घर चाहिए, हमने एक वॉल बनाया। एक सिंपल वॉल से तो घर बनेगा। आप एक वॉल बना दो, आप किसी को बिठा दो, वॉल हो ना हो बंदा तो बनने की हालत वैसी है, बारिश होगी तभी भीगेगा। तो अगर हमें एक सिंपल से सिंपलेस्ट घर चाहिए तो क्या कर सकते? यस, ऊपर से वॉल को थोड़ा सा एक एज निकाल देना, वॉल से थोड़ा सा एज निकाल देना।
अब काम चलेगा। छोटा सा शेड तो हो गया, ठीक है, डॉग वो भी आके बैठ जाएगा आपके घर में, चलेगा। बट क्या है कि आप भी तो बैठ पाएंगे। सिंपल सा सिंपल एक ऐसा घर तो बना सकते हैं, इससे और सिंपल पॉसिबल नहीं। इसके लिए इंसान बैठ के काम चला सकता है, राइट। तो ये जहां पर आपने एक वॉल बनाया और उसको थोड़ा फोल्ड कर दिया, वॉल बना के थोड़ा फोल्ड कर, मान लो वॉल बनाया, वॉल बना के उसको थोड़ा मोड़ दो, और कोई ऐसा है एज निकाल दो, तो वॉल को कब तिरा कर, एक ही बात है, एक रूप समझ बन जाएगा। मतलब वॉल बनाया, थोड़ा सा उससे क्या कर दिया, फोल्ड। ये हमारा सेकंड, वॉल को आपने फोल्ड किया, सेकंड फोल्ड करना पड़ा ना, वॉल बनने के बाद ये होगा। और वैसे आपके पास फिर इस वॉल को 3 डायमेंशन में फोल्ड कर, ऐसे हमारे पास ज्यादा, तो हम क्या करेंगे, वॉल को 3 डायमेंशन में फोल्ड करेंगे और बना लेंगे बढ़िया सा 3 डायमेंशन में फोल्ड कर दिया, बढ़िया सा रूम बना लिया, और उसके अंदर आराम से बैठ के आप कॉफी पी सकते हैं। ये हमारा टर्सरी स्ट्रक्चर। और पैसे हमारे पास, पैसा ही पैसा, ऐसे ढेर सारे कमरे का बनाइए। ये हमारा यहाँ से कुछ बातें आपको सीखने के लिए हमने बनाया इसको, समझ पाओ, आगे पूछेंगे। पहला बात, ब्रिक हमारा यहाँ पर मोनोमर, उधर अमीनो एसिड हमारा मोनोमर। जैसे ब्रिक को जोड़ के आपस में अपने एक स्ट्रेट पहले बनाया पॉलीमर, दैट इज हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। ऐसे ही व्हेन वी ऐड अमीनो एसिड्स टुगेदर एंड वी फॉर्म अ लीनियर चेन, इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर। नाउ आफ्टर क्रिएटिंग अ वॉल, वंस यू क्रिएट एन एज, दीवार को थोड़ा बेंड कर दिया, तो थोड़ा सा रूफ का काम कर सके, तो अपने वॉल बनाने के बाद वॉल को थोड़ा फोल्ड कर दिया, थोड़ा बेंड कर दिया, ये कहलाएगा हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ऐसे ही चेन को जब हम फोल्ड करेंगे, ध्यान देना, हमने बनाया ऐसे, ये हमारा अमीनो एसिड मोनोमर, और इसको जोड़ के बनाया हमने एक पॉलीमर, ये बन गया हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। वंस वी हैव द प्राइमरी स्ट्रक्चर, अगर इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को मैं बेंड कर दूं, ये जो हमने पूरी फोल्डिंग किया, ये बन गया हमारा, ये हुआ सेकेंडरी, ये हुआ सेकेंडरी, जहां पर फोल्डिंग की है वही है सेकेंडरी हमारा उसमें। अब दीवार को अगर आप 3 डायमेंशन में फोल्ड कर दो, ये कमरा देख लो, एक दीवार उधर मोड़ दिया, मोड़ दिया, मोड़ दिया, मोड़ दिया, ऊपर भी मोड़ दिया, डब्बा बन गया। ऐसे ही चेन को अगर आप 3 डायमेंशन में फोल्ड कर तो बनेगा हमारा टर्शियरी स्ट्रक्चर। और अगर ऐसे ढेर सारे कमरे को हमने साथ लिया तो बना हमारा क्वार्टर स्ट्रक्चर। ऐसे ढेर सारे अगर प्रोटीन के टर्शियरी स्ट्रक्चर को साथ लेते हैं तो बनता है प्रोटीन। आप ऐसे 2-3 क्वेश्चन का आंसर। सबसे अच्छा घर कौन सा है? ऐसे ही सबसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होते हैं क्वार्टरनरी घर। मोटिवेट घर कौन सा है? बोले कम से कम, मतलब मिनिमम क्या क्राइटेरिया चाहिए ठीक ठाक घर बनने के लिए? ठीक ठाक बोल रहा हूँ, वो किसी मजबूरी वाला। तो ठीक ठाक घर ऐसा होता है कि भाई हमें कम से कम शेल्टर दे प्लस प्रोटेक्शन दे, बाहर का कोई जंतु अंदर न घुसे। बैठने पता चलेगा देखा एक बिल्ली और एक स्नेक घर में प्रोटेक्शन लग सकती है। एक मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया वाला ठीक ठाक घर हमारा टर्शियरी है ना। ऐसे ही एक अगर मिनिमम से मिनिमम प्रोटीन को थोड़ा फंक्शनल होना पड़ेगा, जैसे रहने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है भाई एक आरके तो दो, एक रूम तो कम से कम दो। ऐसे प्रोटीन को कम से कम ठीक ठाक थोड़ा जो फंक्शन करना है बनना पड़ेगा टर्शियरी स्ट्रक्चर। और जैसे लीस्ट क्राइटेरिया घर बनने का है हमारा सेकेंडरी। ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, किसी भी इंसान का
क्या घर मुझे वॉल के फॉर्म में मिलेगा? तो मिनिमम से मिनिमम क्राइटेरिया है कि अगर किसी इंसान का घर फाइनल स्टेज में है, मतलब जिसके अंदर रह पा रहा है इंसान, तो कम से कम सेकेंडरी। ऐसे ही किसी भी प्रोटीन का फाइनल स्ट्रक्चर, ऐसे अच्छा है कि टर्सरी ले ले या क्वाटरनरी ले ले, लेकिन मिनिमम से मिनिमम अगर किसी स्ट्रक्चर में प्रोटीन फंक्शनल होकर रह सकता है, दैट इज मिनिमम क्राइटेरिया सेकेंडरी। इसलिए इस बार वो ध्यान रखेंगे, जैसे किसी एक वॉल का घर नहीं होता, ऐसे ही कोई भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में, सुनना अच्छे से, कोई भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में फाइनली रहता नहीं। प्राइमरी पे कोई प्रोटीन रुक नहीं सकता, उसे कम से कम तो लेना पड़ेगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर, उससे नीचे नहीं जाओ। टर्सरी ले ले, बहुत अच्छी बात, क्वार्टरनरी और अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया जिसमें कोई प्रोटीन आपको मिलेगा फाइनली एग्जिस्ट करता हुआ, दैट इज सेकेंडरी। सेकेंडरी के नीचे किसी भी स्ट्रक्चर में प्रोटीन फंक्शनल या आपको लिविंग सिस्टम में दिखाई नहीं देगा। क्या है समझ में? जैसे अगर किचन में खाना बन रहा है तो या तो चपाती या पैसे हैं तो पराठे, गीला आटा कोई किसी को नहीं खिलाया, हल्का गीला आटा था वो हमारे प्लेट में अगर खाना आएगा बेसिकली या तो चपाती या फिर कम से कम चपाती, कम से कम या फिर बढ़िया पराठा आ गया मान लो, कोई आटा इसे दे रहे गीला आटा, ऐसा खाना प्लेट में नहीं। ऐसे ही कभी भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर में फाइनली रहेगा नहीं। हाँ, प्राइमरी बनेगा जरूर पक्का, पराठे बनाओ चपाती बनाओ गीला आटा बनता है पक्का है, बट वो प्रोसेस के समय रहता है, टेम्पररी रहता है, बाद में फाइनली वो किसी न किसी फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब आ रहा है बात समझ में? ऐसे ही प्रोटीन कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर में फाइनली रहता, मिनिमम क्राइटेरिया है सेकेंडरी, बढ़िया क्राइटेरिया है टर्शरी, पानी है। तो प्रोटीन आपको जब भी दिखाई देंगे लिविंग सिस्टम में, ईदर सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरनरी, प्राइमरी में कोई नहीं रहता फाइनली। हाँ, प्राइमरी आता सारे प्रोटीन के फॉर्मेशन के प्रोसेस में, सबसे पहला स्ट्रक्चर वही बनता है, बट वो हमें रुकता नहीं। ये सबको आगे बात समझ में? अच्छी बात। अगर फंक्शन हो जाएगा तो प्रोटीन पे काम चला ही सकते हैं। जितना ज्यादा बच्चा आपके पास कॉम्प्लेक्स लेवल का स्ट्रक्चर रखेगा, उतना कॉम्प्लेक्स काम आप कर पाएंगे। यही रीजन आप देखो प्रोटीन के केस में ऐसा 4 लेवल का दिखाई देता है स्ट्रक्चर, ऐसा 4 लेवल का स्ट्रक्चर कहीं नहीं। नंबर 1, नंबर 2, इसलिए प्रोटीन में 20 वैरायटी के मोनोमर है, so that you can have 10 number of combinations possible। यही रीजन है कि जितना डाइवर्स वैरायटी का फंक्शन, बच्चे ने पढ़ा भी था दूसरे पहले, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम प्रोटीन, जितना वैरायटी का फंक्शन प्रोटीन कर सकता है उतना वैरायटी का फंक्शन कोई भी दूसरा बायोमोलिक्यूल नहीं कर सकता। इसमें वैरायटीज बहुत पॉसिबल, और इसलिए बोलते भी हम प्रोटीन को मॉलिक्यूलर हॉर्सेस ऑफ द सेल, सेल के काम करने वाले प्रोटीन। हमारे बात समझिए। तो दिस वाज द प्राइमरी स्ट्रक्चर। चलते हैं आगे सेकंड की तरफ। तो हमने इसका एग्जांपल कितने लिखा प्राइमरी में, क्यों लिखा एग्जांपल? इस सब में है भाई, इसका एग्जांपल ये अभी लिखते हैं सेकेंडरी। तो ये मैं बोला हर क्लास में नहीं करता हूँ, याद है मुझे बात, आई थिंक आपने स्टूडेंट ने पूछा भी। तो जैसे भी आएगा हम देखते हैं। सेकेंडरी किसको बोलेंगे? स्ट्रक्चर। ये वो है दैट इज फॉर्म आफ्टर प्राइमरी, प्राइमरी के बाद बनेगा तो सेकेंडरी बोलेंगे, एंड प्राइमरी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो भी कह सकते हैं सेकेंडरी। कैसे बनेगा ये? तो फॉर्म बाय फोल्डिंग और ट्विस्टिंग, folding or twisting of polypeptide chain. Fold the chains or twist the chain. We get that question. हेलिक्स बना सकते हैं, हेलिक्स ही बनेगा ऐसा ट्विस्ट नहीं है, शीट बनता है हमारे तो अब देखिए फोल्ड करना है इसका, folding or twisting of the chain. Now we have two variant under this structure. पहला सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो लोगों ने देखा था that was helical. The first secondary structure to be discovered by the people were helical, तो नाम दिया helix, and it was the first secondary structure to be studied. तो Greek alphabet में पहले आता है अल्फा, नाम दिया सीक्वेंस के बेसिस पर। Greek alphabet में पहले अल्फा आता है, ये पहला secondary structure था to be discovered, तो उस बेसिस पे अल्फा दिया। स्ट्रक्चर था helical, तो नाम दिया अल्फा हेलिक्स।
The first model of secondary structure we have is alpha helix. तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर चेन को हमने कैसा फोल्ड किया, हेलिकल। तो इसको किया ये कैसा चूज किया, हेलिकल। Formed by helical twisting of polypeptide chain, helical twisting. So when you form a helix, जैसा आपने देखा था तो कार्बोहाइड्रेट में देखा था हमने केमिकल स्ट्रक्चर में, याद है वो चीज? देखा था माइक्रोस बढ़िया बनाता है। यही रीजन है एनसीईआरटी ने लिखा है कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च हैज हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स। अब कई बार लोग कंफ्यूज करते हैं सेकेंडरी कैसे, प्रोटीन का खरीदा हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं, कभी भी फोल्डिंग हो तो मुझे बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इवन ये चीज एक बार मुझे याद है 2016 और 17 में एक केमिस्ट्री वाले सर हम लोग से पूछने आए, क्या कुछ पीने पढ़ाते हैं तो पीने में क्या बोलना चाहिए, पीने कौन सा स्ट्रक्चर सेकेंडरी और क्वाटरनरी। पीने में दो चेन होते हैं, डबल हेलिकल है, टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। अब बताओ सेकेंडरी और टर्शियरी, फिर सेकेंडरी और क्वाटरनरी। कॉम्प्लेक्स काम करता है, अपॉर्चुनिटी भी है ना। कितने लोग बोलेंगे क्वाटरनरी, ये अच्छा कॉन्फिडेंस एक लाख बढ़िया। कितने लोग सेकेंडरी, क्या लॉजिक है सेकेंडरी का, क्यों सेकेंडरी दो चीजें हो स्ट्रक्चर तो है ना, दोनों साइड में अच्छे से काम करता है। सर यहाँ पर दो चेन है तो दोनों चेन अलग अलग फिक्स हो रहे हैं और दो चेन तो हमने फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को भी कनेक्ट कर दिया। तो क्या होना चाहिए, एक काम करेंगे इसका आंसर मिल जाएगा आपको थोड़ी देर में, ठीक है। तब तक सबसे पहले रखिए आंसर मिलेगा आपको जब पढ़ेंगे फुल एनालिटिक्स। चलिए यहाँ पर अल्फा हेलिक्स, अब लॉजिक क्या है पहले इसको बनाओगे, सेकेंडरी होगा तब तो सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ही होता है। सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ही पढ़ा है वो भाई। अभी हमने हेलिकल ट्विस्ट किया चेन को, अब क्या है कि अगर आपने हेलिकल फोल्ड किया भी है तो वी नीड समथिंग हु कैन मेंटेन दिस हेलिकल टर्न, वरना खुल जाएगा दोबारा। नहीं कुछ स्टेबलाइज करने के लिए दोगे तो फोल्डिंग के बाद दोबारा अनफोल्ड होता है। दैट इज व्हाई द स्ट्रक्चर मस्ट बी स्टेबलाइज्ड। कौन करते हैं स्टेबलाइज, बताओ कैसा, इंट्रा और इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रा So the structure is stabilized by intramolecular hydrogen bond. Stabilized by intramolecular hydrogen bonds. क्या कह रही हो, नोट दे करके ऐड कर दे पॉइंट। वैसे कंपलसरी नहीं है पॉइंट, बट एनसीईआरटी ने मेंशन किया, ध्यान रखना। एनसीईआरटी ने लिखा इस लाइन कि पूरा का पूरा चेन अल्फा हेलिक्स नहीं बनाएगा। यस, ओनली सम पोर्शन ऑफ द चेन विल फॉर्म हेलिकल अल्फा हेलिक्स, अदर पोर्शन विल फॉर्म अदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। वैसा ऐसा कंपलसरी नहीं होता, कई बार ऐसा होता है कि पूरा चेन बन गया अल्फा हेलिक्स, लेकिन एनसीईआरटी ने बच्चे की तरह आपको समझाया है कि भाई पूरा चेन नहीं बनाएगा। तो हम अभी वही बोलेंगे, फिर ध्यान रखेंगे ओपन टू दिस कि भाई फ्यूचर में ऐसा भी आ सकता है प्रोटीन्स पूरा का पूरा अल्फा हेलिकल, ऐसा भी वही बोलता है एनसीईआरटी, ठीक है। अब अच्छा बोलो, हम अब ऐसी
ऐसे ही फर्दर सोलर मिलेगी. Only some portion of the polypeptide chain कैसे बंद कर देंगे इसे? हाँ चेक कैसे बंद किया किसी ने? हाँ AC बात तो किसे क्या मजाक एक लिमिट तक मजाक किसने बता दो वरना सबको फुल करके देखिए इसके पास ऐसा छोड़ दीजिए होएगा शॉप ही अच्छा किसे क्या भाई कोई बताएगी सबको निकलेगा सब कुछ फटाफट एक सेकंड और ये भारत में आपको बस ऑफ कर पहले करें तो बंदी बाहर जाके बुलाने के क्या ऑफ कर बाकी बोलने के रखते हैं ले बस ऐसा ही तो कर लो और जिसका भी सेंसर लोकेशन आप बढ़िया से जा रही हो वहां पे आप क्लास हो जाएंगे
It's like the taxes are only. ये काम करेंगे आप लोग हम सबके सब अगले क्लास से अपना फोन बाहर नहीं रखेंगे। जिसका फोन ये जिसका फोन मुझे उसके हाथ में पॉकेट में या डेस्क पे दिखा ऊपर जाएगा। फोन है तो बैग में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वो दोनों फर्क नहीं करता मुझे, क्लास में वो फोन बैग पे जेब में भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। फीलिंग से पॉकेट में रखा नहीं चाहिए, बैग में तो बैग में। only some portion of the chain for आपको पता है एक चीज मेरे पास भी फोन था, हम बंद कर सकते नहीं मैं वो काम नहीं करना तो चाहता कि जो आप लोग करें, मतलब मैंने एक बार ऑफ कर दिया सब सुन लेते हैं। हाँ सर को कहीं रखी इस फोन के चक्कर में 50 दिन इसको ऑन ऑफ करते हुए यही खराब तभी चीज आउट ऐसे खराब क्लास सेंटर होता है फालतू से ये सेंट्रलाइज ऐसे और एक खराब हो फिर 4 रूम पे इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। ये रीजन है कि बाद में इन्होंने इसका रिमोट ऊपर ऐसा कंट्रोल नहीं इस यहाँ से ऑन हो सकता इसे हम फोन से नहीं करते हो। अब छोड़ दिया पहले कर दिया अब छोड़ दिया हम करेंगे फिर लग सब सुन जाएगा इसे तू बाहर उसको बुलाती है ये आपकी हेल्प की पर आप ज्यादा छेड़ेंगे तो खराब तो आपको झेलना। कॉमेडी बदमाशी एक लिमिट तक ठीक है वो एक्सेस होना चाहिए। और सबसे बुरी बात है बंदी जा रही है पहले कभी तीन कृपा करनी पहले करनी तो तुम्हारे दिमाग पर देना चाहिए। आगे देखते हैं एग्जाम्पल है नहीं एनसीईआरटी में लिख सकते हो अल्फा की रेटिंग ऑफ है दूसरा सेकेंडरी स्ट्रक्चर दैट वी हैव इज बीटा प्लेटेड शीट। शीट भी मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं लिखा है एनसीईआरटी में लेकिन ऐसा होता है मैं बता देता हूं। कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल पॉलीपेप्टाइड चेन और formed by folding of single polypeptide। एक ही चेन के बैक टू बैक फोल्ड होने से भी बन सकता है जैसे देखिए तो can be formed by same chain एक ही चेन बैक टू बैक फोल्ड होकर के बना सकता है। और एनसीईआरटी ने इसी रेफरेंस में बोला एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन में वी कैन हैव बोथ द वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। कहीं पर हेलिकल टर्न हो गया तो कहीं पर बना दिया बीटा प्लेटेड शीट या फिर ये मल्टीपल अलग अलग चेन से भी बन सकते हैं दोनों पॉसिबिलिटीज है। अगर अलग अलग चेन है तो फिर दे कैन बी अरेंज पैरेलली और एंटी पॉसिबल। तो एक चेन से भी बन सकता है मल्टीपल चेन से भी बन सकता है।
तो इनके बीच में भी हाइड्रोजन बनता है। बिल्कुल होगा। अगर सेम ही चेन का बना है इंट्रामोलिकुलर, मल्टीपल चेन का बना है एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा ज्यादा कुछ, कितने चेन होंगे मैंने बोल दिया। एनसीईआरटी ने पैरेलल एंटी पैरेलल भी नहीं बोला। वैसे एंटी पैरेलल यूज्ड टू बी मोर स्टेबल कंपेयर्ड टू द पैरेलल, वो भी नहीं लिखा एनसीईआरटी ने। अंडरस्टैंड? एग्जांपल देख लीजिए, बीटा केराटिन ऑफ feathers, horns, hooves, scales. We have fibroin protein of silk. इसमें है एंटी पैरेलल, बीटा केराटिन में है पैरेलल। नोट देखिए यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। Only some portion of the chain or beta pleated sheet, ये भी हमेशा कहना अच्छा है, क्योंकि लगता है देखिए उसमें इस एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे कहा कि मल्टीपल चेन से बन सकता है बीटा प्लीटेड शीट। जब कहते हैं मल्टीपल चेन से बन रहा है बीटा प्लीटेड शीट, तो उस केस में तो पूरा चेन ही शीट बना। तो दोनों बातें होती है, बट एनसीईआरटी ने एक सिंपल में लिया है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक सिंपल सा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, या फिर बोल सकते हैं कि सिंपल सा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो इसी चेन में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कुछ पोर्शन क्या बनाएगा, करते हैं इसका फोल्डिंग, क्या लिखेंगे, कुछ पोर्शन बना रहा है अल्फा हेलिक्स, बाकी पोर्शन बीटा हेलिक्स। फिर हमने पूरा कंप्लीट। आफ्टर सेकेंडरी बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी ने वैसे मेंशन नहीं किया है, आकाश के मैट में है और थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना चाहिए। तो थर्ड स्ट्रक्चर स्टार्ट कीजिए, ट्रिपल हेलिक्स और कोलेजन हेलिक्स। थर्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, third secondary structure is triple helix or collagen helix। ध्यान दो, आपके दिमाग में रहेगा ये चीज शायद से कि अल्फा बीटा के बाद गामा क्यों नहीं किया आपने, क्योंकि अल्फा बीटा के बाद ट्रिपल हेलिक्स तुरंत से नहीं मिला था। आफ्टर इनिशियली लोगों को दो ही मिला सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा एंड बीटा, एंड देन दे फाउंड टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड देन दे फाउंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। बहुत ज्यादा दिन बीतने के बाद लोगों को मिला ट्रिपल हेलिक्स, बिकॉज ट्रिपल हेलिक्स सारे प्रोटीन्स में या फिर बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है, ये सारे प्रोटीन्स में नहीं होता। मेनली कहाँ मिलता है, कोलेजन। तो बहुत बाद में मिला लोगों को ये वाला स्ट्रक्चर, तो वहां पर अल्फा बीटा के सीक्वेंस में आया। आप देखेंगे 3-4 साल पहले आकाश के मैट में भी ट्रिपल हेलिक्स को लोग अलग से लिखते थे। सेकेंडरी कंप्लीट किया, टर्शियरी क्वाटरनरी फिर लिखते थे, बिकॉज सीक्वेंस बाद में मिला। अभी जो होना चाहिए वही किया, सेकेंडरी के साथ ऐड किया। क्या कहते हैं, सीक्वेंस साथ में नहीं मिला, मतलब अल्फा बीटा के बाद जस्ट ट्रिपल हेलिक्स ऐसा मिल गया, ऐसा नहीं। तो ट्रिपल हेलिक्स, दो बातें यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे।
ट्रिपल हेलिक्स क्यों कहते हैं? Because consist of 3 polypeptide chains and those 3 chains together form helical structure. 3 helical structure है और 3 चेन मिलकर के बनाते हैं, सो नाम है ट्रिपल हेलिक्स। ठीक है, और यूजुअली बस कोलेजन में मिलता है तो नाम है कोलेजन। तो लॉजिक ऐसा है कि आप बोलोगे फिर इसने अल्फा हेलिक्स क्यों बनाया, ट्रिपल हेलिक्स क्यों बनाया? अब ये सब एनसीईआरटी में नहीं है, आप सुन सकते हैं। देखो अल्फा हेलिक्स लिखना मत सुनना, अल्फा हेलिक्स तब बनता है when you have a proper turn, जो प्रॉपर स्मूथ टर्न लेते हैं तो बढ़िया सा हेलिक्स बनता है। लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास होते हैं अमीनो एसिड्स, उसको हम बोलते हैं हेलिक्स ब्रेकर्स। अगर वो होंगे तो हेलिक्स खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? To form alpha helix we must have smooth turn, whereas लेकिन कुछ ऐसे हमारे पास अमीनो एसिड जहां पर the polypeptide chain can take a sharp turn, जैसे एग्जांपल के लिए ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के केस में जहां पर मिलेगा ग्लाइसिन, चेन वहां से शार्प टर्न ले सकता है, क्योंकि ग्लाइसिन का R ग्रुप बहुत ही छोटा है, H बहुत छोटा ग्रुप, R ग्रुप बहुत छोटा है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं करता, चेन वहां से शार्प टर्न ले सकता है। R ग्रुप थोड़ा भी बड़ा होता, स्टेरिक हिंड्रेंस करता, तो शार्प टर्न नहीं ले पाते, तो देर से घूमते। तो दो ऐसे हमारे पास अमीनो एसिड है, उसको हेलिक्स ब्रेकर बोलते हैं, एक ग्लाइसिन एंड दूसरा है प्रोलिन। अगर आप गौर से देखो, प्रोलिन रिंग वाला स्ट्रक्चर है और इसके एक कॉर्नर पर NH ग्रुप है और दूसरे कॉर्नर पर COH ग्रुप है, और बॉन्ड NH एंड COH के बीच ही बनता है। और ये प्रोलिन में बाजू बाजू में है, ऐसे एक यहाँ एक यहाँ, और इसलिए प्रोलिन के केस में भी चेन यहाँ से शार्प टर्न लेता है। तो जब भी कहीं पर चेन में मिलता है ग्लाइसिन एंड प्रोलिन, चेन वहां से शार्प टर्न लेते हैं, और जब चेन लेते हैं शार्प टर्न तो प्रॉपर हेलिक्स नहीं बनता। अरे समझ, कोलेजन के केस में we have 3 polypeptide chain and each chain has 1/3 just glycine। 3 चेन है यहाँ पर और हर एक चेन में 30% के आस से ज्यादा होगी, 1/3 बस और बस ग्लाइसिन हेलिक्स ब्रेकर। बाकी जो बचे 2/3 उसके 50% प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन है, 1/3 ग्लाइसिन और बाकी के 2/3 में 50% प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन। तो 1/3 रफली कह सकते हो, 2/3 का हाफ आप मिक्स कर दो, बन गया 1/3। बचा जो हमारे पास 1/3, मतलब समझ लो कि यहाँ पर जो है 2/3 हेलिक्स ब्रेकर होता है और 1/3 बस होता है नॉर्मल अमीनो एसिड। इसलिए कोलेजन का कोई भी एक चेन प्रॉपर अल्फा हेलिक्स नहीं बना पाता, इसे 3 चेन मिल करके थोड़ा हेलिकल स्ट्रक्चर बना। समझ पा रहे हो? तो वो बातें लिख देते हैं, फिर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर consists of 3 polypeptide chains. Each chain has the sequence glycine XY। मतलब हर 3 में से एक अमीनो एसिड 1/3 ग्लाइसिन, बाकी X की जगह मिलेगा प्रोलिन, Y की जगह पर मिलेगा हाइड्रोक्सीप्रोलिन। उतना लिखने की जरूरत नहीं। और the 3 chains together form helical structure। कोई भी एक चेन प्रॉपर हेलिक्स नहीं बना पाता, तीनों चेन मिलते हैं जब, तब थोड़ा सा बनता है helical structure। And the structure is stabilized by intermolecular hydrogen bonds। इंटर की 3 चेन है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, कितने ही काफी है। एग्जांपल दे दीजिए, प्लस प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन के रिंग्स का इंटरलॉकिंग भी होता है। इंटरलॉकिंग इफेक्ट्स ऑफ प्रोलिन एंड हाइड्रोक्सीप्रोलिन। अब ये क्या है इंटरलॉकिंग इफेक्ट? देखो जैसे कि एक चेन
जैसे बचपन में आप खेल खेल में दो दोस्त फिंगर को इंटरलॉक कर लेते हैं, ने ऐसे किया दूसरे ने ऐसे किया, ये लॉक थोड़ा मिला हमें सपोर्ट। ऐसे ही क्योंकि चेन में ढेर सारा प्रोलिन है, हाइड्रोक्सी प्रोलिन भी है, तो दो नेबरिंग चेन के जो रिंग है प्रोलिन के वैसे अटक जाते हैं। अब थोड़ा सा देते हैं सपोर्ट, इतना ही था। डीएनए वही बोल रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देखो हेलिकल स्ट्रक्चर है विथ थ्री चेन्स, लेकिन फिर भी हम क्या कह रहे हैं सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बस मल्टीपल चेन से नहीं बनता। टू हैव अ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वी मस्ट गो बियॉन्ड टर्शरी। ध्यान रखना इस बात को। क्वाटरनरी तभी बनेगा जब टर्शरी बन चुका हो, और टर्शरी तब बनता है जब फोल्डिंग कैसा हो, 3 डायमेंशनल। तो अगर आपके पास 3 डायमेंशनल फोल्डिंग नहीं है मींस यू डोंट हैव टर्शरी स्ट्रक्चर। और जब तक हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं है क्वाटरनरी, उसके आगे की बात है, क्वाटरनरी बनेगा ही। सही है।